loyalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though, ambition, flow inside my DNA. I was, I got. Do a life game for me in a box. I redefine any definition you got. I am the kind got making steps to the top. The flames up and put up, niggas gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Hello everyone and welcome to Pakistan Drift Series 2025. This is your host Hassan with me. Today all of you guys joining from all over the Pakistan or jahan se bhi aap dekh rahe hain, welcome to the stream. Again, this is the final day of this Pakistan Drifting Series 2025. As we said in the last stream yesterday, this will be the final Tandem battles. Top 16 जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है. उसके बाद टॉप 8 की तरफ मूव करते हुए जाएंगे and then we will crown the final top 3 podiums for this special Pakistan Drift Series event. तमाम जो देखने वाले हैं एक दफ़ा फिर से जो है मैं आप सबको याद दिलाता चाहूँ कि make sure if you have joined us just now, share the stream, लाइक ज़रूर करें और मेक श्योर करें कि आप अपनी सपोर्ट यहाँ पे दिखाते हुए नजर आए अपने फेवरेट ड्राइवर के लिए. पहली जो टॉप 16 की यहाँ पर एक टेंडम रहेगी उसमें हमारे सामने स्टार्ट करेंगे द क्राउन चैम्पियन ऑफ द प्रीवियस पाकिस्तान ड्रिफ्ट सीरीज़ 2024 अब्दुल्ला मरवत और उनको चेस कर रहे होंगे शाहीर खटक. गाड़ियों की थोड़ी सी अब अगर बात करें तो यहाँ पर टोयोटा चेसर ड्राइव कर रहे हैं X90 अब्दुल्ला मरवत जो है वो चेसर यहाँ पर अब्दुल्ला मरवत जो है वो यहाँ पर हमें टोयोटा चेसर में नजर आएंगे शाहीर खटक. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द ओवरऑल ट्रैक एंड ट्रैक जो मेन ट्रैक है एक क्लिपिंग पॉइंट रहेगा फॉर इनिशिएशन इनटू जोन 4. ऑल ऑफ आवर टीम्स आर ऑल ऑफ द बैटलिंग कार्स आर एंड ड्राइवर्स आर एट द लाइनअप ग्रिड. उसके बाद जो स्टार्ट जोन है एंड देन वी हैव द डोनट जोन जहाँ पर गाड़ियों को वार्म अप किया जाएगा और उसके बाद स्टार्ट की तरफ हमें ये गाड़ी मूव होती हुई नजर आएंगी. और ड्राइवर्स आर लाइंड अप एट द स्टार्ट पोजीशन. लीड में एक दफ़ा फिर से रहेंगे यहाँ पर अब्दुल्ला मरवत और going up against Shaheer Khatak. एक तरफ अब्दुल्ला मरवत the crown champion of PDS 2024 टोयोटा चेसर के अंदर X90 के अंदर मौजूद है. he will be leading this tandem और शाहीर खटक उनको चेस करते हुए नजर आएंगे फर्स्ट रन के अंदर BMW L36 के अंदर. so this is gonna be nail biting tandem जो कि इन दोनों ड्राइवर्स के दरमियान हमें देखने को मिलेगा. going toward the cars. So we have our grey car Abdullah Mawad, Toyota Chaser और उनको BMW L30 में चेस करते हुए नजर आएंगे हमें खटक. Let's have a quick look at all the cars from every side. Both of these drivers are ready for this first run of top 16. And make sure all of the viewers like ज़रूर करते हुए जाएं stream to show your support. There you go. Waiting for the cue. Waiting for the view. Drivers are all loaded, ready with their helmets, with their safety gear. Make sure इस तरह की races के अंदर सबसे जो important चीज़ है वो driver safety भी रहती है.
कार्स ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ दीज कार्स आर कस्टम बिल्ड्स और उनको इसी तरह की ड्रिफ्टिंग यूज़ के लिए जो है वो बनाया जाता है. There you go, thumbs up comes from Abdullah Marwat, ready for the first tandem of this Pakistan Drift Series final day. There you go, क्यों मिल चुका है यहाँ पर दोनों टीम्स. मरवत चेस कर लीड करते हुए, खटक उनको चेस करते हुए नजर आएंगे. फर्स्ट फ्लिक गेटिंग इनटू द फर्स्ट आउटसाइड जोन. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लाइन अप करते हुए प्रॉक्सिमिटी जो है वो मेंटेन नहीं रखी पाई जा रही खटक की तरफ से. थोड़ा सा रोल ओवर देखने को मिला. एंड इन द मीनवाइल अब्दुल्ला मरवत लीडिंग this tandem is moving closer to the outside zone 4. There you go, on the other side zone 5 को क्लिप करते हुए जाएंगे यहाँ पर. Beautiful finish from the side of Marwat, and the chase driver is still on its way. और वो भी यहाँ पर finish line को cross करते हुए नजर आएंगे. First tandem getting completed, and Marwat with a beautiful execution, beautiful control on his car. Toyota Chaser and BMW L36 यहाँ पर थोड़ा सा लैग करते हुए नजर आई. थोड़ा सा जो है वो करेक्शन देखने को मिली हमें फर्स्ट आउटसाइड जोन के बाहर, और उसके बाद एक चेस चलता हुआ जो है वो हमें नज़र आया. There you go, look at this man, look at this. जिस तरह से बेहतरीन कंट्रोल देखने को मिला मरवत की तरफ से. एंड एक स्पिन ऑफ जो है वो देखने को मिलता है खटक की तरफ से. अर्ली कंट्रोल लूज करते हुए नजर आए. सो डेफिनेटली जजेस विल कीप एन आई ऑन दिस करेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ खटक. एंड बहुत बेहतरीन मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर रिवॉर्ड होते हुए मरवत को नजर आएंगे. रोड कंट्रोल देखने को मिला यहाँ पर मरवत की तरफ से. दैट वाज द फर्स्ट टेंडम जिसमें मरवत लीड कर रहे थे और उनको चेस करते हुए हमें नजर आया खटक जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो पीछे आते हुए नजर आए. बट there you go, going back to the second run for the first tandem. इस दफ़ा खटक जो है वो लीड कर रहे होंगे और अब्दुल्ला मरवत जो है वो उनको चेस करते हुए नजर आएंगे. खटक with first spin off in the first run, obviously pressure उनके ऊपर बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है. अब्दुल्ला मरवत on the other side, he will be kind of I would say relaxed because उनका पहला रन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाता है. You just have to only mimic the movement of खटक एंड मेक श्योर कि वो किसी किस्म की करेक्शन या किसी किस्म की मिस्टेक जो है वो ना करें, और डोर टू डोर जो है वो यहाँ पर रहें खटक के साथ. क्लोज इन प्रॉक्सिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. मनूवरेबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिली कि काफ़ी अच्छी रही अब्दुल्ला मरवत की तरफ से. बट देयर यू गो, आर वी गोइंग फॉर द सेकंड रन. को एक सेंड यहाँ पर देखने को मिला खटक की तरफ से लीड करते हुए. गेटिंग इनटू फर्स्ट आउटसाइड जोन, मूव इनटू सेकंड वन. थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होते हुए नजर आए. एंड यहाँ पर खटक जो है वो अपनी इस लीड को जो है वो लूज़ करते हुए हमें नज़र आएंगे. एंड आई थिंक Marwat will win this chase. There you go, winner for our first tandem right on your screen, Abdullah Marwat in his Toyota Chaser RX90. Abdullah Marwat जो है वो यहाँ पर इस tandem को जीतते हुए, और खटक again second time couldn't complete his run early जो है वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस करते हुए हमें नजर आया खटक. बट इट वाज अ गुड ट्राई ओवरऑल. अब्दुल्ला मरवत जो है वो यहाँ पर इस सेकंड रन के अंदर जीते हुए. देयर यू गो, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही एंट्री आउटसाइड जोन 2 के अंदर आती हैं, बैक व्हील्स बिल्कुल ट्रैक छोड़ते हुए जाते हैं. एंड दैट वाज द विनिंग मोमेंट फॉर अब्दुल्ला मरवत फॉर हिज फर्स्ट टेंडम ऑफ पाकिस्तान ड्रिफ्ट सीरीज 2025. देयर यू गो, नेक्स्ट टेंडम हमारा रेडी हो चुका है. वी हैव आवर ड्राइवर्स मोहम्मद इब्राहिम गोइंग अप अगेंस्ट राजा फैजान, also known as Beamer 360. मोहम्मद इब्राहिम अपनी टोयोटा क्रेसिडा के अंदर जो है वो यहाँ पर चेस करते हुए नजर आएंगे राजा फैजान को फर्स्ट टेंडम की फर्स्ट रन के अंदर, सेकंड टेंडम के फर्स्ट रन के अंदर, सॉरी फॉर द करेक्शन. और मोहम्मद इब्राहिम ऑन द लेफ्ट साइड, वाइट कार, टोयोटा चेसर क्रेसिडा. देन वी हैव राजा फैजान बीमर 360 BMW F30 के अंदर मौजूद हैं यहाँ पर ऑन द राइट साइड ऑफ द फ्रेम. Black BMW going for the lead this time around. First run ready हो चुके हैं, और the players यहाँ पर जो drivers हैं वो दोनों के दोनों ready हैं. क्यू का सिर्फ वेट किया जा रहा है. इब्राहिम will be chasing this BMW. drivers यहाँ पर रहेंगे राजा फैजान. दूसरी तरफ इब्राहिम की अगर हम बात करें, इब्राहिम showed immaculate control on his Cressida in the first solo runs, qualifying runs के अंदर उन्हें बहुत अच्छा कंट्रोल यहाँ पर दिखाया.
and this time around he is up against one of the finest drivers of this Pakistan Drifting Series 2025. There you go. Let's have a quick look at the driver. Thumbs up. आ चुका है यहाँ पर फैजान की तरफ से एंड यहाँ पर क्यू का वेट किया जा रहा है क्यू दी जा चुकी है फैजान चेसिंग लीडिंग दिस टैंडम और पहला यहाँ पर फ्लिक आता हुआ फर्स्ट टैंडम का जोन को हिट करते हुए सेकंड जोन की तरफ हिट करते हुए एंड गाड़ी थोड़ी सी यहाँ पर लीड की डीरेल होती हुई हमें नज़र आएगी एंड on the other side Ibrahim is still going for the full run. It could be a practice run for him. Zone 4 के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर स्पिन आउट होते हुए नज़र आए बट लीड जो है वो बिल्कुल अपना ऑफ ट्रैक होती हुई नज़र आई हमें सो दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर राजा फैजान एंड आई थिंक दिस रन को जो जजेस हैं वो ऑब्वियसली इन द फेवर ऑफ इब्राहिम जो है वो जज करते हुए हमें नज़र आएंगे प्लेयर जो है वो रिटैक हो चुके हैं लेट्स हैव अ क्विक लुक एट व्हाट हैपेंड विद द होल लीड एंड चेस टैंडम 2 फर्स्ट रन के अंदर जो है वो क्या हुआ यहाँ पर फर्स्ट आउटसाइड जोन को बेहतरीन तरीके से क्लियर करने के बाद सेकंड आउटसाइड जोन के अंदर एंटर होने से पहले ही उसको अप्रोच करते ही प्लेयर जो है वो ऑफ ट्रैक होते हुए नजर आए राजा फैजान बीम 360 एंड ऑन द अदर साइड वी सॉ के स्पिन आउट जो है वो हमें इब्राहिम की तरफ से भी देखने को मिला pretty close to outside zone 4. Let's go back to our start line जहाँ पर दोनों ड्राइवर्स अब हमें रेडी जो है वो होते हुए नज़र आएंगे थोड़ी देर के अंदर बट स्टिल वी आर फिगरिंग आउट व्हाट हैपेंड विद द लीड कार Raja Faizan having some trouble with the control and he's going back to the start line. Obviously this time around he will be chasing Ibrahim in his BMW F30 and on the other side Cressida जो है वो lead करती हुई हमें नजर आएंगी this time around white Cressida Mohammad Ibrahim. This was I would say quite favorable for Ibrahim but quite unfortunate for Raja Faizan. Obviously थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पर लूज करते हुए नजर आए anyhow still not end of the world ड्रिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स के अंदर इस तरह की जो है वो सिचुएशन से आपको डील करना पड़ता है and you have to make sure that you keep your heads up high. We're back to the start zone. Ibrahim is already lined up. He's just waiting for his chase car. Raja Faizan का यहाँ पर वेट किया जा रहा है on the start line. Pretty soon he'll be there with Ibrahim and this time around he'll be chasing Ibrahim. So pressure जो है वो ज़्यादा यहाँ पर लीड कार के ऊपर हमेशा से रहता है because they have to make sure that their maneuverability is correct और chase जो है वो ज़्यादा करीब ना आ सके उनके in this drift while they are hitting those outside zones. There you go. I think we are going for the second run of this tandem number 2 of top 16 Pakistan Drifting Series and I think there is a big hit on the side of Raja Faizan. There you go. Raja Faizan was already dealing with some early bumper loss, front bumper loss during practice, but this time around this is the final run for this tandem number 2. Ibrahim this time around leading this tandem and Raja Faizan have to chase. There you go. Lead driver on our screen. This is Mohammad Ibrahim ready for this lead run. Thumbs up आता हुआ यहाँ पर और इसी के साथ क्यू का वेट किया जा रहा है और thumbs up दोनों ड्राइवर्स को दिया जा रहा है. There you go. Quick send in into the tandem. Quick acceleration देखने को मिल रही है यहाँ पर from the side of Ibrahim and second के अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्टी यहाँ पर चेस रहेगा from the side of Raja Faizan. Raja Faizan this time around door to door यहाँ पर रहेंगे. फ्रंट बम्पर काफ़ी ज़्यादा अलाइन होता हुआ पिछले डोर के साथ. There you go. Approaching outside zone 4. Proximity काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बनती हुई जो है वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ इब्राहिम और राजा फैजान के अंदर. And Ibrahim this time around leading the chase and covers the finish line. Ibrahim finishing things off with a banger of
finish, I must say. And I think Faizan this time around wasn't able to chase Ibrahim this time around. Let's have a quick look what happened and where exactly things went wrong. Let's have a quick look. First जोन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लियर आउट किया दोनों ही गाड़ियों ने. सेकंड फेज़ के अंदर यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल, थर्ड आउटसाइड जोन के ऊपर थोड़ा सा स्पिन आउट देखने को मिला. और चेस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी. क्लिपिंग पॉइंट के करीब आकर दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर, उनमें से एक गाड़ी राजा फैज़ान जो थोड़ा सा कंट्रोल लूज़ करते हुए नजर आए. एंड इब्राहिम went through with his whole run. Let's have a quick look what happened actually in the start. Well, let's go toward our next tandem. पिछले tandem जो है वो मोहम्मद इब्राहिम और राजा फैज़ान के दरमियान जो है वो दोनों फिनिश हो चुका है, दोनों के दोनों रन्स के अंदर. Once Raja Faizan led the run and once Mohammad Ibrahim led the run. दोनों ही केसेस के अंदर जो है वो मोहम्मद इब्राहिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हुए हमें नजर आए राजा फैज़ान. Let's have a quick look once again what happened in the beginning. And then this was it. Entry point जो है वो थोड़ा सा एक करेक्शन देखने को मिली हमें from the side of Ibrahim चेस के अंदर. Well, let's have a quick look at our tandem number 3. थर्ड tandem के ड्राइवर्स जो हैं हमारे सामने रेडी हो चुके हैं. And this time around let's have a quick look once again on the replay what happened with the second run, जहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिली early on राजा फैज़ान. And वो करेक्शन जो है वो पूरी तरह से राजा फैज़ान मिस करते हुए हमें नजर आए सेकेंड जो आउटसाइड जोन है. And then he tried to recover once again in outside zone 3. But I think it was already too late. Proximity काफ़ी ज़्यादा मैच करने की, करीब करने की कोशिश की उन्होंने. आउटसाइड जोन 3 क्लियर करने के बाद गाड़ी काफ़ी करीब रही पिछले डोर के साथ वो इब्राहिम्स क्रेसिडा. But again, there you go. We have our winners of our tandem number 2. We have winner of this tandem, Mohammad Ibrahim. Obviously, from the whole run, it was quite evident कि यहाँ पर थोड़ी सी problematic situation रही for these guys, for especially Raja Fazan for Beamer 360, and Mohammad Ibrahim winning this and proceeding forward to top 8. Let's go back onto the start line. This time around, we have our two drivers. Omar, he will be leading this tandem और उनको चेस करते हुए नजर आएंगे हमजा इफ्तिखार, the winner of Solo's runs yesterday. There you go. Quick initiation. स्विच करेंगे, मूविंग करेंगे, फर्स्ट जोन क्लियर करते हुए सेकंड जोन की तरफ जाएंगे. बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोल फ्रॉम द साइड ऑफ उमर, लीडिंग द चार्ज और लीड करते हुए जाएंगे टुवर्ड जोन 3. अपना रन वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बैक व्हील्स दोबारा से लाइन करने की कोशिश, क्लिपिंग पॉइंट के करीब से गुजरते हुए मूविंग टुवर्ड आउटसाइड जोन 4. Obviously the chase car is nowhere in the frame. इसके साथ अपना रन जो है वो कंप्लीट करते हुए हमें नजर आएंगे. यहाँ पर जो लीड है उमर वो अपना रन यहाँ पर कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे. और जो चेस कार थी, द सोलो विनर ऑफ यस्टरडे couldn't keep up. एक क्विक स्पिन आउट जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिला in the early on. Let's have a quick look what happened. There you go. बेहतरीन एंट्री फ्रॉम द साइड ऑफ लीड. चेस जो है वो यहीं पर ही अपना कंट्रोल लूज करते हुए नजर आए. बैक व्हील्स की जो ट्रैक्शन है वो उस तरह से उनको हेल्प नहीं करती टू एग्जीक्यूट द मनूवर. एंड ही was actually nowhere to be seen in this tandem. Chase जो है वो अपनी complete नहीं कर पाए. And that was the time where Omar actually finishing his run. Going back, going for the second run of this tandem number 3, Omar versus Hamza Iftikhar. This time around, Hamza Iftikhar will be leading this tandem और उनको chase करते हुए नजर आएंगे. Omar, Hamza Iftikhar is riding a Mark II, and
Let's have a quick look. Players are once again lined up at the start position. This time around, just waiting for the cue. गाड़ियाँ ready हो चुकी हैं. This time around, Umar will be chasing Hamza Iftikhar. थोड़ा सा pressure जो है वो यहाँ पर रहेगा Hamza Iftikhar के ऊपर because his first run didn't went as planned. But this time around, I think Muhammad Umar has to be careful that he can win this if a small mistake happens on the side of Hamza Iftikhar. Hamza Iftikhar, Toyota JZX. And दूसरी तरफ भी हमें Toyota JZX ही नज़र आ रही है मोहम्मद उमर की तरफ से. This time around, Hamza Iftikhar ready. Quite a promising performance from this driver yesterday in the solo runs, the final solo run. And this time around, Kumil Chukia, let's go. Moving toward the first outside zone. Quick acceleration, lead करते हुए नजर आएंगे. Move in किया जाएगा. Throwing into the first zone. Second zone को भी यहाँ पर clip in करते हुए बिल्कुल close follow उमर करते हुए यहाँ पर हमें नजर आएंगे. Outside zone 3 की तरफ move करते हुए थोड़ा सा off track होते हुए हमें नजर आएंगे यहाँ पर Hamza Iftikhar, but moving toward the clipping point. There you go. Going into the outside zone number 4. Distance काफी ज़्यादा maintain कर चुके हैं यहाँ पर Hamza Iftikhar, and look at that sight. किस तरह से ऑफ ट्रैक डस्ट जो है वो उन्होंने यहाँ पर उड़ाते हुए अपनी रन को फिनिश किया और एक स्ट्रॉन्ग रन यहाँ पर हमजा इफ्तिखार की तरफ से देखने को मिली. This was not the same driver in the first run. Obviously, it looks completely different the way he was maneuvering his car, and what a run from this guy. Beautiful execution and a good chase from the side of Umar as well. Distance obviously काफ़ी ज़्यादा बना लिया था after outside zone 3, but उससे पहले जो है वो उमर फिर भी एक अच्छी यहाँ पर चेस देते हुए नजर आए हमें हमजा इफ्तिखार को. Let's have a quick look once again. Outside zone 3, this is where the distance was quite much. But look at that side, man. Look at that side. Beautiful execution. Slightly off track. Back wheel जो है वो काफ़ी ज़्यादा डस्टी बनाते हुए एक तरह की स्मोक स्क्रीन उन्होंने डिप्लॉय कर दी है उमर के लिए. बट उमर स्टिल मैनेजेस टू कंट्रोल हिज व्हीकल और finish line जो है वो यहाँ पर क्रॉस करते हुए नजर आए उमर. And let's have a quick look who won this final tandem, and none other than this is Muhammad Umar for tandem number 3 winner यहाँ पर देखने को मिलेगा. Obviously his first run was very good. Second run में थोड़ी सी corrections जो है उनकी तरफ से देखने को मिली while he was chasing Hamza Iftikhar, but he will comfortably win and move toward the top 8 for this Pakistan Drifting Series 2025. There you go. Going for our tandem number 4, top 16. We have Umar Khan lead. Chase ke andar Usama Rashid. There's a slight wait. Both of the drivers are ready at the start line. Lead ke andar Umar Khan rahenge this time around. There you go. Thumbs up milta hua yahan par. Usama Rashid will be chasing him this time around in his BMW. There you go. Quick start. Full send in. Quick acceleration. Moving toward the first zone. Reference point को cross किया. अच्छे एंगल से एंट्री zone 2 के अंदर. Going toward a quick chase. यहाँ पर थोड़ा सा chase में differential जो है वो हमें देखने को मिल रहा है. But look at the maneuverability coming from the side of Omar. Omar leading this run. But on the other side, oh my goodness, what a way of entry and exiting outside zone 4. Quick rollover. This could be a mistake, and almost, it was so close to the finish line. वो फिनिश लाइन को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे. द चेस ड्राइवर, इट वाज क्वाइट अ रन, लेकिन 4 आउटसाइड जोन उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किए. 5th जोन से पहले एक हमें जो है वो स्पिन आउट देखने को मिला. बट लुक एट दैट, क्या ज़बरदस्त किस्म की सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिल रही है दोनों ही ड्राइवर्स की तरफ से. और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बन चुका था लीड और चेस ड्राइवर के अंदर, और व्हीकल जो है वो उस तरह से अलाइन नहीं देखने को मिलेगा. बट लुक एट दैट एंट्री की कोशिश, बट क्विक स्पिन आउट एंड चेस विल कैच अप इन द मीनवाइल. ड्राइवर्स गेटिंग रेडी फॉर द रन नंबर 2, जहाँ पर दोनों ही ड्राइवर्स जो हैं वो स्टार्टिंग लाइन के ऊपर आते हुए हमें नजर आएंगे. There you go. Getting lined up. Chase will be leading this time around, और जो लीड कार थी वो इस दफ़ा चेस करती हुई नजर आएगी. There you go. A lead is already lined up at the start zone, waiting for the chase car. There you go.
This time around, Osama Rashid will be leading in his BMW E46, and Umar Khan उनको chase करते हुए नजर आएंगे अपनी Toyota Cressida के अंदर. There you go. Osama, let's go for a quick thumbs up, man. There you go. Thumbs up आता हुआ Osama Rashid की तरफ से. Quick cue का wait. दोनों drivers को. There you go. Going for the run number 2. Tandem number 4 this is. And this time around, we have Omar chasing Osama. Osama यहाँ पर quick entry. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से Zone 2 को totally miss करते हुए नजर आएंगे. And going for Zone 3. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का यहाँ पर हमें switch देखने को मिला उनकी तरफ से. Moving toward outside Zone 4. चेस जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुकी है. लीड काफ़ी बेहतरीन लीड करते हुए ज़बरदस्त किस्म के एंगल के साथ Zone 4 को क्लियर आउट करेंगे, बट मिसिंग आउट Zone 5. बट चेस विल आल्सो कैच अप एंड दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर क्रॉस करती हुई फिनिश लाइन. इट विल बी अ क्लोज कॉल. जजेस जो है वो हमें बताते हुए नजर आएंगे कि who's gonna win for this tandem number 4. बट इट वाज बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है वो इस टेंडम को फिनिश करते हुए वी आर हैप्पी कि इस दफ़ा जो है वो यहाँ पर स्पिन जो है वो देखने को नहीं मिली. बट दिस टाइम अराउंड I think we're gonna see this tandem. Guys, come on. One more time. एक दफ़ा फिर से हमें ये tandem देखने को मिलेगा. एक क्लोज कॉल थी. दोनों ही ड्राइवर्स जो हैं वो स्कोरिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बराबर देखने को मिले हमें. बट ये जो tandem है obviously इसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन let's have a quick look. Look at that synchronization. Obviously control देखने को मिल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का उसामा की तरफ से इस दफ़ा लीड के अंदर. चेस में he was a bit struggling. कैचअप करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. बट लुक एट दैट ब्यूटीफुल फ्रंट व्हील एग्जीक्यूशन. एज वी सेड, वन मोर टाइम जो है वो हमें ये टेंडम देखने को मिलेगा once all of the rest of the tandems are finished. But as you're watching Pakistan Drift Series 2025, this time around, let's have a quick look. The two drivers are going to battle against each other. We have Hassan Butta in his BMW E46, and then we have Yawar Khan in his Toyota JZX80. Yawar Khan, this time around, he will be chasing Hassan Butta in the first tandem. फर्स्ट रन के अंदर जो है वो यहाँ पर हसन बुट्टा को चेस करते हुए नजर आएंगे. ऑब्वियसली हसन बुट्टा वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्राइविंग टैलेंट आउट देयर. लुक एट दैट. दोनों के दोनों ड्राइवर्स रेडी हो चुके हैं यहाँ पर. यहाँ पर गोइंग अप अगेंस्ट हमजा बुट्टा. दिस विल बी वन हेक ऑफ अ बैटल फ्रॉम बोथ ऑफ दीज ड्राइवर्स. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के इनके सोलो रन्स हमने देखे कल के दिन. बट दिस टाइम अराउंड हसन बुट्टा हैव अ लॉट ऑन हिज शोल्डर्स. is one of the finest talents. There you go. Waiting for the thumbs up. And यहाँ पर क्यों मिलता हुआ ज़बरदस्त तरीके से क्विक इनिशिएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी हमजा बुट्टा की तरफ से. हमजा बुट्टा गोइंग इन ऑन द फर्स्ट आउटसाइड जोन. सेकंड आउटसाइड जोन को क्लियर करते हुए चेस यहाँ पर थोड़ी पीछे रह चुकी है. एंड हमजा बुट्टा मेकिंग दोज मनूवर ज़बरदस्त तरीके से लाइन अप करते हुए आउटसाइड जोन 3 के अंदर जोन 4 को अप्रोच करते हुए नजर आएंगे. एंट्री यहाँ पर जोन 4 के अंदर. बैक व्हील्स दोनों के दोनों जोन 4 लाइन रहेंगे लाइन के साथ. गोइंग फॉर द फाइनल जोन आउटसाइड जोन 5. क्विक एंट्री एंड देयर यू गो. बेहतरीन चेस. डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बन चुका था यावर और यहाँ पर हम हसन के दरमियान. बट इट वाज अ गुड चेस. हसन ऑब्वियसली कीपिंग दैट डिस्टेंस. बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी क्लोज इन करने नहीं दी उन्होंने यहाँ पर यावर खान को. बट बेहतरीन रन यहाँ पर हसन बुट्टा की तरफ से. लुक एट दैट क्विक एंट्री इनटू जोन आउटसाइड जोन 1. जोन 2 को भी उन्होंने क्लियर किया एंड स्विच करते हुए जोन 3 की तरफ. एंड चेस के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा हमें जो है वो सिंक्रोनाइजेशन देखने को नहीं मिली. डिस्टेंस जो है वो उन्होंने उस तरह से मेंटेन नहीं किया हुआ था क्लोज इन डिस्टेंस. बट ओवरऑल बुट्टा आई थिंक विल एक्चुअली बी इम्प्रेसिंग द जजेस मोर देन यावर इन दिस पर्टिकुलर रन. चेस थोड़ा सा हमें थोड़ी सी जो है वो पीछे नज़र आई. थोड़ा क्लोज अप कैच इन जो है वो कैचअप करते हुए हमें नज़र आए यहाँ पे यावर ऑन टू आउटसाइड जोन 4. बट ओवरऑल इट वाज अ क्लोज कॉल. लेट्स गो.
This time around, Yawar will be leading this run and Hassan Bhutta जो है उनको चेस करते हुए नजर आएंगे. Yawar Khan leading in his Toyota ZX90 और Hassan Bhutta will be driving BMW 46. Thumbs up आता हुआ यहाँ पर Yawar Khan की तरफ से. Both of the drivers are ready, waiting for the cue. Waiting for the cue. दोनों drivers को confirm किया जा रहा है. And there you go. Run number 2 of this tandem, where Yawar is this time around. He is leading this run. और जबरदस्ती के साथ लेते हुए जोन 1 के अंदर जोन 2 बेहतरीन कंट्रोल यहाँ पर यावर की तरफ से एग्जीक्यूट किया जा रहा है. जोन 3 के अंदर एंट्री लेंगे एंड क्विक स्पिन आउट और यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो यावर के लिए बनती हुई नजर आएंगी. एंड आई थिंक दिस इज वेयर यावर अंडरस्टैंड्स इट ऑलरेडी के उन्होंने अपनी यहाँ पर कंट्रोल लूज किया इस रन के अंदर. एंड दिस विल बी अ बिग माइनस ऑन हिज साइड. Both of the cars crossing the finish line. And I think we are already हमें पता है कि यहाँ पर कौन से ड्राइवर जीत के जाने वाले हैं. बहुत ही अच्छा रन था ड्राइवर का. एंड लुक एट दिस, बहुत ज़बरदस्त एंट्री जोन 1 और आउटसाइड जोन 2 के अंदर. बट ऑन द करेक्शन एंड मूविंग टुवर्ड जोन 3 while he was trying to align his rear wheels with the line in outside zone 3, यहाँ पर spin out होता हुआ नजर आएगा हमें यावर की तरफ से. Pakistan Drift Series once again, both of the drivers of Tandem. And let's have a quick look at the winner, and the winner is none other than let's keep it alive for you guys. Cheer up in the live chat. क्या लगता है आपको कि कौन सी टीम जो है, कौन से ड्राइवर जो हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे winning side पे? It is none other than Hassan Bhutta, winner of this particular tandem. और यावर अपनी second run के अंदर while he was leading in this run थोड़ा सा हमें जो है वो control lose करते हुए नजर आया. Let's go for the next one, guys. Pakistan Drifting Series 2025 top 16. This time around is Hashir Asim going up against Ahmed Riaz. Both of the top drivers from yesterday's solo runs. One of the best talent when it comes to Ahmed Riaz in his BMW L. But in the meanwhile, judges are keeping a close eye on all of these runs, making sure that they don't miss out anything. They have their marking sheets in their hand, and they're checking who is going to take the crown home today. Kaun podium pe first position pe rahega. Let's have a quick look at our lead driver, Ahmed Riaz, and his BMW E36. There you go. Thumbs up milta hua to our camera. And going in to this tandem. There you go. Lead ke andar rahenge yahan par. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से quick acceleration. First outside zone. Chase car. Still a bit lagging behind. Kind of losing control. Correction देखने को मिलेगी यहाँ पर chase car की तरफ से. The lead is already at outside zone 4. Quick entry यहाँ पर मिलेगी. Rear wheels दोनों के दोनों मौजूद रहेंगे zone के अंदर. Quick switch going toward outside zone 5, and lead is just obliterating this overall circuit. और ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्त control के साथ finish line cross करते हुए यहाँ पर हमारे lead driver. Chase was still a bit behind in this run, and I think बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का control हमें देखने को मिला अहमद रियाज की तरफ से. Hashir Azim, there you go. Look at that entry, man. Chase couldn't even switch in for the angle, and Ahmed Riaz just making sure that he touches every zone before, every corner before he goes for the next one. And बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का कंट्रोल उनकी तरफ से देखने को मिला. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर zone 4, and look at this entry. ज़बरदस्त entry. Slightly off track हुए, but that's something not that of a big deal. But this time around बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है वो अपनी लीड को फिनिश करते हुए ड्राइवर नजर आए. Let's go.
Now lead is in chase and chase is in lead. We have our drivers Hashir Asim lead के अंदर this time around, and we have Ahmed Riaz. भाई go thumbs up मिल चुका है यहाँ पर. Early acceleration from the side of Hassan. There you go. First throwing in the corner और यहाँ पर spin out के chances काफ़ी बेहतरीन थे. Chase करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर lead driver, and this time around off track होते हुए driver. Lead unfortunately off track होती हुई नजर आएगी, and this will be counted as a win for the chase driver. Control यहाँ पर miss out करते हुए lead, and Chase will have this win in his bag. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट अच्छा लिया उन्होंने. फर्स्ट जोन को मिस आउट करते हुए नजर आए. सेकंड जोन में अच्छी एंट्री फ्रॉम द साइड ऑफ लीड, बट Chase was right there, chasing every move, synchronized and keeping close proximity. Let's have a quick look. Let's have a quick look at the replay. Look at that. एंट्री बहुत अच्छी. करेक्शन थोड़ी सी देखने को मिलेगी यहाँ पर. ऑफ ट्रैक होते हुए पहले भी नजर आए आउटसाइड जोन 2 में, एंड व्हेन इट वाज आउटसाइड जोन 3 it was I think that's where the driver lost control. Look at that. So judges are already taking their verdict, and Ahmed Riaz gonna take this win in his back, moving toward top 8. And बेहतरीन कंट्रोल इनकी तरफ से देखने को मिला लीड के अंदर in his BMW L36. Let's go for our next tandem. Pakistan Drift Series 2025, brought to you by SA Group and Vroom Racing Circuit. Our next tandem is ready. Lead and chase car right on your screen. This time around, Farhan Afridi going up against Hamad Afridi. Hamad Afridi जो है वो यहाँ पर लीड करते हुए नजर आएंगे in his Toyota JZX90, and फरहान अफरीदी उनको चेस करेंगे अपनी Toyota JZX90 के अंदर. Let's have a quick look at our lead driver. Ready, thumbs up यहाँ पर मिलता हुआ, and Q का वेट किया जा रहा है यहाँ पर on the side of our start referee. Farhan Afridi this time around will be chasing, and Hamad Afridi will be leading this run. Quick cues, ready, go! Quick acceleration from the side of lead. थोड़ा सा यहाँ पर distance maintain किया. Going for the first zone. बेहतरीन तरीके से first zone clear किया. Second zone. बेहतरीन execution यहाँ पर देखने को मिली lead driver की तरफ से. चेस भी काफ़ी क्लोज यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं. प्रॉक्सिमिटी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होती हुई नजर आई लीड, बट लुक एट दैट स्विच गोइंग फॉर आउटसाइड जोन 4. जोन 4 यहाँ पर क्लियर करते हुए ज़बरदस्त मैन्यूवरेबिलिटी देखने को मिली लीड ड्राइवर की तरफ से. फरहान आफरीदी ऑब्वियसली विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम टू चेस दिस काइंड ऑफ रन, जहाँ पर बेहतरीन फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पर रन देखने को मिला लीड ड्राइवर की तरफ से. एंड ऑल द क्राउड इज ऑल्सो अमेज्ड टू सी दैट काइंड ऑफ अमेजिंग ड्रिफ्ट execution from the side of lead driver. Look at that entry, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर लेगी उनकी तरफ से zone 2 के अंदर. Both of the wheels lining up with the zone. Same goes for zone 3 control. थोड़ा सा वहाँ पर D-track हुए rear wheels जो हैं वो उतरते हुए नजर आए ट्रैक से, but just look at that. Look at that. ज़बरदस्त counter steering देखने को मिल रही है यहाँ पर प्लेयर की तरफ से, और ड्राइवर यहाँ पर फिनिश करते हुए अपनी इस रन को. चेस was able to catch up, but again it wasn't even a close call.
Once again, going for the run 2. Hamad Afridi this time around. He'll be chasing Farhan Afridi. Both of these guys are driving a Toyota JZX90. Farhan Afridi, he was chasing in the previous run. And this time around, Farhan Afridi have a lot to prove this time around. Is lead के अंदर. He has to bring Hamad into this run. And there you go. Q मिल चुकी है. और फर्स्ट आउटसाइड जोन क्लियर करते हुए यहाँ पर फरहान अफरीदी गोइंग फॉर द जोन 2. क्विक स्विच गोइंग फॉर आउटसाइड जोन 3. क्लोज. यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल देखने को मिल रहा है इस ड्राइवर की तरफ से. चेस ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लीड ड्राइवर बट गोइंग फॉर आउटसाइड जोन 4. बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है दोनों ड्राइवर्स की तरफ से. बट लुक एट दैट फिनिश. बट दिस विल बी अ close call, I must say, for the drivers, and at the same time judges के लिए भी यहाँ पर एक difficult verdict रहेगा for this particular run. Let's have a quick look at the replay. बेहतरीन एंट्री यहाँ पर मिलती हुई लीड ड्राइवर को into zone 1. zone 2 के अंदर थोड़ा सा जो है वो मिस आउट करते हुए काफ़ी एरिया जोन का मिस करते हुए नजर आए. बट दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिमिक करते हुए यहाँ पर नजर आए. Distance इतना ज़्यादा नहीं था from the side of chase. Farhan Afridi obviously was lagging a bit when he was chasing, but this time around बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का रन अफरीदी की तरफ से देखने को मिला. I think this will be another one more time from the side of judges. This run will be again said by the judges. It'll be a one more time run. This was a close call, as I said. Well, let's go for our tandem number. Next tandem. This time around, we have Haris Khan in his Toyota Cressida. He'll be leading the charge, and Asfandiargul will be chasing in his Toyota JZX90. Quick acceleration. हारिस यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से एंट्री जोन 1 के अंदर. जोन 2 को भी बेहतरीन तरीके से क्लियर करते हुए आएंगे. चेस थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करती हुई. Judges will keep an eye on that. Chase is unable to catch up with the very situation, and Haris Khan, he's leading the charge and going toward outside zone 4, जहाँ पर back wheels को ज़बरदस्त तरीके से अलाइन करते हुए नजर आएंगे. Quick switch moving toward outside zone 5. And this time around, Haris finishing off strong, and lead was just chasing the shadow of Haris. ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर फिनिश करते हुए हारिस खान अपने इस फर्स्ट रन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हारिस खान जो है वो फिनिश करते हुए इस रन को. Look at that entry onto outside zone 2. Both of the wheels getting lined up. Zone के अंदर रहेंगे. Quick acceleration कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे अपनी इस ड्रिफ्ट को. एंड isn't that a piece of art जिस तरह से यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिल रहा है हारिस खान की तरफ से. दिस इज एज सेड कि हारिस खान का बाय रन था just because of unavailability of another driver. Well, let's go for our second run of this tandem. I think there is a problem with this run. हारिस खान जो है वो यहाँ पर विनर रहेंगे इस टेंडम के. The chase driver was having some trouble with his vehicle. और Toyota Cressida के अंदर यहाँ पर हारिस खान विनर रहेंगे इस टेंडम के. Let's have a quick look. आप डोनट सेक्शन के अंदर देख सकते हैं हारिस खान is making sure that he's keeping his tires warmed up.
Drivers are getting ready. Let's go for our next run. Next tandem, I would say. This time around is Sumar Khan and Saman Rashid going up against each other. Both of the drivers are lined up for our next round. Usama Rashid going up against Umar Khan. Umar Khan leading in his Toyota Cressida, and Usama Rashid in his BMW E46. This will be a good chase for the side of Usama Rashid. Usama Rashid had to make sure that this time around he doesn't let go Umar this time around. इतना ज़्यादा chase जो है उनको नहीं बनाना. Quick acceleration. Umar Khan entering. ज़बरदस्त तरीके का chase यहाँ पर देखने को मिला. And there's some trouble on the side of lead car, but Chase is still continuing with his run, and the lead was having some problem. Obviously, यहाँ पर full stoppage देखने को मिला lead की तरफ से, and this run will be completed. I think there is some problem on the side of the driver. Vehicle full stoppage के ऊपर आ चुका है. Let's have a quick look what happened here. दोनों ही drivers की ज़बरदस्त entry, थोड़ी सी correction देखने को मिली Chase की तरफ से, but while going for the switch into outside zone 3, यहाँ पर एक problem I think face करते हुए नजर आए driver, and I think this will be a quick run win for the Chase driver. The crew is making sure that driver जो भी trouble यहाँ पर उनको face कर रहे हैं. Let's see what just happened. Judges are also keeping an eye on the run, making sure the driver is not having much trouble. I think यहाँ पर थोड़ा सा vehicle malfunction जो है वो हमें देखने को मिल रहा है. Vehicle malfunction I think देखने को मिल रहा है. Meanwhile, our lead driver this time around is waiting for the Chase car to get to the start zone. I think it will be a win if जो Chase कार है वो नहीं पहुंच पाती इस रन के लिए. I think it will be a quick buy run for the side of the lead driver. This will be a buy run, guys. Obviously the Chase car is not there due to vehicle breakdown. Obviously he will complete his run. It will be a solo run. Judges will still judge this run. Cue मिल चुका है यहाँ पर, and I think driver is ready. Usama is ready for his second run.
goes 63. BMW going for the goal. There you go. Starting his quick solo run. Quick acceleration. Flicking into the first corner. Going for the second one. Wales बिल्कुल touch करते हुए outside zone 2 को. Going for zone 3 and he's having some trouble there. And I think he will go for outside zone 4. Correction देखने को मिली. Outside zone 4. Ready to take the entry. Entry यहाँ पर नहीं मिलती हुई नजर आएगी. And Saudi just making sure he touches zone 5 and still again missing out and covering the finish line. Osama finishing his run for this tandem. Let's have a quick look at the replay. Pakistan Drift Series. There you go. It was a solo run. First zone बेहतरीन entry उनकी तरफ से देखने को मिली. Second zone में भी almost rear wheel एक zone के अंदर आ चुका था. But in the third zone, this is where the correction happened. थोड़ा सा oversteer करते हुए नजर आया हमें driver यहाँ पर and correction के फौरन बाद going for the final switch. And there you go. Osama Rashid is the winner of this tandem. Osama Rashid, obviously it was a bye run. Osama going for top 8 now. Top 8 में compete करते हुए नजर आएंगे Osama. This was a quick bye run for this guy. Judges are keeping a close eye on these runs and making sure that judgment is passed fairly. We are getting ready for our next tandem. Getting ready for our next tandem. और closing एक दिखाया जा रहा है यहाँ पर of the driver. Both of the drivers are lined up at the start position, waiting for the cue. Just waiting for the cue from the start of the referee. Hamad Afridi going up against Farhan Afridi. This was a close call early on. Once again, one more time it is, and this time around Farhan is in the chase. There you go. First flick, transition into first zone, second zone, close call रहेगी. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से chase यहाँ पर देखने को मिल रही है फरहान अफरीदी की तरफ से. Both of these guys are running their JZX 90s. Zone 3 को clear out करते हुए काफ़ी ज़्यादा distance यहाँ पर बनाया जा चुका है. Zone 4 back wheels are aligned. जबरदस्त तरीके का drift यहाँ पर देखने को मिला. And once again a close call on this chase. Finish line को cross करते हुए दोनों के दोनों vehicles. Both the Afridis showing a spectacular view for all the viewers out there. जबरदस्त किस्म का रन हमें देखने को मिला है यहाँ पर हमाद आफरीदी और फरहान आफरीदी की तरफ से. There you go. The attendance is pretty good. People are enjoying the sightings of this drift show. Look at that. Zabardast entry यहाँ पर देखने को मिली इनकी तरफ से into the zone 2. बहुत अच्छा chase, synchronized chase. Distance थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर रहेगा while finishing off. And look at that. Beautiful work done by the side of lead driver. Chase भी उनको छोड़ते हुए नज़र नहीं आए. And he made sure that both of these vehicles are close by. थोड़ा aggressive chase जो है वो हमें देखना जो है वो ज़रूरी था. बट aggressive chase उस तरह से देखने को नहीं मिला. Distance जो है वो एक maintain रखा गया यहाँ पर. There you go. This time around Hamad Afridi
is in chase and Farhan Afridi will be leading first one. Oh, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का यहाँ पर चेस देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमाद आफरीदी की तरफ से कीपिंग अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी डोर टू डोर यहाँ पर आते हुए फ्रंट व्हील्स जो है वो बैक डोर के साथ लाइन अप होते हुए नजर आएंगे क्लिपिंग जोन से गुजरकर मूविंग टुवर्ड द जोन आउटसाइड जोन 4 दोनों ही व्हीकल्स काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हुए क्विक स्विच एंड दिस वाज अ क्लोज कॉल रिट्रैक करते हुए नजर आएंगे चेस को एंड फरहान आफरीदी almost winning this one and this vehicle got detracked and this chase was a bit unsuccessful at the end. Obviously judges will mark accordingly, but this will be a big minus. The stoppage was a big minus. Just trying to वो collision जो है उसको रोकने के लिए यहाँ पर chase जो है वो मिस आउट करती हुई नजर आई इनकी तरफ से ब्रेक किया गया. but let's have a quick look how it started. फर्स्ट जोन बेहतरीन तरीके से क्लियर किया गया. दोनों की दोनों व्हीकल्स एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से सिंक्रोनाइज पोजीशन में चेस बहुत ही अच्छा किया. फर्स्ट 4 जोन यहाँ पर फरहान अफरीदी की तरफ से हमाद अफरीदी की तरफ से एंड फरहान अफरीदी एंड हमाद अफरीदी दोनों में से let's see who got the win and this was Farhan Afridi. Farhan Afridi winning this tandem for himself and ascending to top 8 of this Pakistan Drift Series 2025. Let's have a quick look जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब गई and obviously that was a big minus for the chase. Look at that. दोनों vehicles काफ़ी करीब आते हुए बैक बम्पर लाइन हुआ फ्रंट के साथ और यहाँ पर चेस जो है वो डी ट्रैक होती हुई नजर आई while he was trying to avoid the collision और इसी के साथ फरहान अफरीदी जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना फिनिश कंप्लीट करते हुए अपने लीड के अंदर और विनर रहेंगे इस टैंडम के. Let's wait for our top 8 while we are waiting for the list of top 8 fixtures जो हैं वो हमें थोड़ी देर में मिलेंगे but before we go there it will be a quick break. We'll be going on a short break and we'll be right back with top 8 action. We'll be right back.
साथ पहले ड्राइवर मौजूद है यहाँ पर अब्दुल्ला मवद. Obviously, we know them. He was a top qualifier for our previous season of 2024. अब्दुल्ला कैसे हैं आप? और सबसे पहले मुझे बताएं कि what's your plan for top 8? Assalamu alaikum. My plan for top 8, slow and steady. I don't need to, मतलब मैं full नहीं जाना चाहता. इंशाल्लाह final में push करेंगे. But when you overdo तो उसमें भी काफ़ी वो backlash मिलता है. Obviously, और थोड़ा सा हमारे जो first time viewers हैं उनके लिए बताएं कि how long you've been doing this और क्या practice जो है वो आपकी थी इस event के लिए. यार आई थिंक अभी मुझे 2 साल हुए हैं और सिमुलेटर पे मैंने तकरीबन 7-8 साल प्रैक्टिस किया. तो अभी ऑन ट्रैक आई 2 years only. Well, we wish you best of luck for your run. और that was Abdullah Marwat, wishing him all the best. चलेंगे next driver की तरफ. And we have Mr. Hassan Bhutta with us. Hassan, what's your plan for top 8? Yaar, I can't say much about this. Let's hope for the best. So for the best, or as a first time viewers के लिए बताएं how long you've been practicing and what kind of mindset you bring when you come to the track. यार मुझे अप्रॉक्स 4 years हो गए हैं started drifting और लेकिन मैं टाइम टू टाइम काफ़ी ब्रेक्स लेता रहता हूँ तो मेरा सीट टाइम उस तरह नहीं था बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार. Alright, we wish you all the best for the top 8. Thank you so much. हमारे साथ मौजूद थे हसन भुट्टा. We are moving toward our next driver जो कि यहाँ पर अपनी कार के साथ हमारे साथ मौजूद हैं and बहुत ही बेहतरीन बिल्ड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अहमद की तरफ से. अहमद, first of all, welcome to PDS. क्या कहेंगे आपको अभी तक को आपको एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है यहाँ पे? यार बहुत ज़बरदस्त है अभी तक और फाइनल में मज़ा आएगा क्योंकि अपने आप को पुश करेंगे. आपका प्लान स्पेशली आपके जो कंटेंडर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देगा? क्या प्लान है आपका इस टॉप 8 के लिए? मैं तो घुसने में तैयार हूँ. फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, हाउ लॉन्ग यू बीन डूइंग दिस, और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह की सपोर्ट आप चाहेंगे अपने लिए और तमाम जो ड्रिफ्टर्स हैं यहाँ पर उनके लिए? मैं ये 5 साल से कर रहा हूँ स्ट्रीट पर. अभी 2 साल से हमने स्ट्रीट बंद किया और ट्रैक पर आ रहे हैं. तो सेफ्टी वाइज भी ये जगह अच्छी है क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा मतलब खतरे हो सकते हैं और मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है. That's even better. Obviously, fun के लिए एक जगह पे, but when you get into professional side, obviously it gets difficult. We wish you all the best. और अपने top 8 के run को जो है वो successfully execute करें. We're moving toward our next driver. We have Osama with us. Osama, first of all, welcome to PDS. कैसा feel करें atmosphere को and what do you think कि top 8 के लिए आपकी क्या strategy रहने वाली है? थैंक यू एंड काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने अभी ज्वाइन किया है और अभी टॉप 8 पर आ गए तो अच्छा ही फील हो रहा है. So थोड़ा सा बताएं फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को जो कि एट होम या वेन्यू पे आपको देख रहे हैं, how long you've been practicing for this और what was your inspiration, how you came into drifting? एक्चुअली मैं तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था. मैं गोस्ट था 63 में उधर ड्रिफ्ट करता, स्ट्रीट ड्रिफ्टिंग करता था. फिर अहमद आया तो उसने मुझे इधर का मोटिवेट किया कि यार स्ट्रीट्स करते हो तो इधर ट्रैक भी आके ट्राई करो. तो बस ट्राई करने आ गए हम लोग. ज़बरदस्त. वेल, अगर फर्स्ट टाइम में आप टॉप 8 में आते हैं ये बहुत बड़ा पुश होगा आपके लिए. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टॉप 8 और एक अच्छा रन जो है वो हमारे व्यूअर्स को दिखाएं. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. मूविंग टुवर्ड द सेकंड साइड गाइस, वहाँ पर हमारे साथ जो है वो हमारे नेक्स्ट ड्राइवर जो है वो मौजूद हैं यहाँ पर. अनदर बेहतरीन ड्राइवर यहाँ पर रहेंगे जिन्होंने आज के दिन को शुरू किया हमारे साथ. मोहम्मद इब्राहिम, वेलकम टू PDS. क्या कहेंगे अपने कंटेंडर्स को स्पेशली? व्हाट्स योर प्लान फॉर दिस नेक्स्ट 4 tandems? Assalamu alaikum. Thank you very much. This is my first time and I can't believe that I am in the top 8. It's unbelievable. मेरा अभी बैटल मरवत के साथ है and I believe he has a lot of skill. तो देखते हैं आगे, अल्लाह जानता है. I'll try my best. आपका पहला ही जो रन है वो एक जो क्राउन चैंपियन थे पिछले साल के उनके साथ ऑब्वियसली प्रेशर होगा. बट अगेन फर्स्ट टाइम अगर आप टॉप 8 में आते हैं, दिस इज इन इटसेल्फ इज अ बिग मोमेंट फॉर यू. स्पेशली थोड़ा सा बताएं हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को कि हाउ यू स्टार्टेड इनटू दिस एंड व्हाट्स योर इंस्पिरेशन बिहाइंड स्टार्टिंग इनटू ड्रिफ्टिंग? My inspiration was I always used to be, I always loved the sport and it's been 3 years since I've been drifting, but track पे मेरा अभी शुरू हुआ है. I started in May last year and alhamdulillah it's going really well. Lovely. I am really hopeful कि आप इसको top 4 तक लेके जाएं and eventually make it to the finals. But if you're enjoying the process, that's what we want. बहुत आपको best of luck कहेंगे for your run. Let's move toward the next driver and we have none other than the guy with the style points,
मिस्टर हारिस। हारिस, क्या कहेंगे? सबसे पहले एक दफ़ा थोड़ा सा हम इनकी कार को देखेंगे। इन सेल्फ इज़ अ वेरी प्रिटी बिल्ड। और हारिस, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। दे ऑलरेडी नो यू हैव अ बिग प्लान फॉर दिस फाइनल। व्यूअर को बताएं हाउ लॉन्ग यू बीन डूइंग दिस एंड व्हाट्स योर इंस्पिरेशन डूइंग इनटू गेटिंग इनटू ड्रिफ्टिंग। इंस्पिरेशन तो मेरे लिए मरवत थी था, लेकिन उसके अलावा बस अब जो है ना, मैं इन सबको जो है ना बताऊंगा, मिलूंगा सबसे अच्छे से, ठीक है, और मिलेंगे सबसे हम। जबरदस्त। और हाउ लॉन्ग यू बीन डूइंग दिस, थोड़ा सा ये भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। और अगेन स्पेशली टॉप 8 के लिए आपका क्या प्लान रहेगा? मैं 2 साल से ड्रिफ्ट कर रहा हूँ, और ये 2-3 साल से गाड़ी बन रही थी, अभी भी बन रही है। और टॉप 8 का ये प्लान है कि सबसे पहले तो मैं फरहान अफरीदी को आउट करूँगा नेक्स्ट मैच में, इंशाल्लाह। उसके तो बस चलते आगे, इंशाल्लाह देखी जाएगी सारे। वी विश यू ऑल द बेस्ट। फरहान अफरीदी की तरफ जाने से पहले हम अपने नेक्स्ट ड्राइवर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट PDS। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा हमारे अपने फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को, अपनी गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं, एंड स्पेशली व्हाट्स योर प्लान फॉर टॉप 8। Okay, Assalamualaikum ji. My name is Mohammad Umar, aka Umar Drifts, and this is my Mark II. It's a JZX90 with a V8, and it's been a crazy event so far. Or we're hoping for something even more crazy now. आप थोड़े सब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि हाउ लॉन्ग यू बीन इनटू ड्रिफ्टिंग एंड व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू दिस स्पोर्ट्स। I always wanted to be a football player actually. So उसकी वजह से it was beautiful. I had a good experience here, and yeah. That's lovely। और अभी तक के लिए एक चीज़ तो काफ़ी कांस्टेंट है, देखने को मिल रही है कि ड्राइवर्स आर हैप्पी विद द कंडीशंस, दे आर हैप्पी विद द ट्रैक, दे सी इट एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। और टॉप 8 के लिए आपने बताया आपका प्लान है मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। स्पेशली क्या मैसेज देंगे स्पेशली उन ड्राइवर्स को जिनके अगेंस्ट आप फर्स्ट टाइम कम्पीट करें? यार, I would say कि everyone should focus on their lead run, ठीक है? तो ये है कि everyone should focus on their lead run. That's all I'm gonna say to the drivers. We wish you all the best, man. Good luck. Thank you so much. Thank you so much. That was it, guys. Moving toward our next driver. और यहाँ पर जो है वो ड्राइवर को थोड़ा सा हम बुलाएंगे यहाँ पर, एंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का इनकी तरफ से रन रहा। द फाइनल रन इट वाज। हम क्या कहेंगे सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को कि हाउ लॉन्ग यू बीन डूइंग दिस एंड व्हाट्स योर इंस्पिरेशन बिहाइंड गेटिंग इनटू ड्रिफ्टिंग? माय नेम इज़ फरहान अफरीदी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया। फरहान अफरीदी जी, ओके। तो हमने ये स्टार्ट किया तकरीबन 3-4 इयर्स अगो ऑन स्ट्रीट, और ट्रैक पे जो इट्स अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो अच्छा है, हाँ। और बस हम पेशावर से अभी यहाँ तक आए हैं, तो हर एक ड्राइवर को करना चाहिए कि वो ट्रैक पे सेफ एनवायरनमेंट में खेलें। तो वी आर डूइंग दैट टू। और शोएब मलिक जो है, उन्होंने हमें माशाल्लाह प्यारा ट्रैक प्रोवाइड किया है। पाकिस्तान इट्स ओनली द वन ट्रैक अवेलेबल, तो गुड सीन इंशाल्लाह। एंड स्पेशली फर्स्ट टाइम व्यूअर्स जो कि पहली दफ़ा देख रहे हैं इस चीज़ को, आई वुड से कि दिस ड्राइविंग ट्रैक इज़ राइट इन द मिडस्ट ऑफ लाहौर, आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर। एंड मेक श्योर अगर आप विजिट भी करना चाहते हैं, वांट टू सी द होल प्रोफेशनल सेटअप, आप देख सकते हैं। एंड स्पेशली थोड़ा सा हमें बताएं अपने गाड़ी के बारे में, व्हाट्स योर प्लान एक्चुअली फॉर टॉप 8? It is actually a JZX X90 and having a 1UZ VTI engine. It's having currently a problem, but वो कुछ करके like do a trick with it तो चल जाती है. But I'm hoping to be in top 3. So let's hope for the best. Obviously, it's time for the runs. We wish you all the best, and hoping to see you again next time. Thank you so much. So that was it.
I got loyalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got muscle, though, ambition, flow inside my DNA. Take a seat, you cannot stand it. All I know the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Back once again after a short break. आप देख रहे हैं Pakistan Drift Series 2025. We have our first driver for top 8 lined up. Abdullah Marwat going up against Mohammad Ibrahim. Abdullah Marwat will be leading this first tandem और उसके बाद इनको चेस करते हुए नजर आएंगे मोहम्मद इब्राहिम. We have Abdullah Marwat in his Toyota Chaser and Mohammad Ibrahim will be chasing him in his Toyota Cressida. Both of the drivers are lined up at the start zone. Lead will be Abdullah Marwat and Mohammad Ibrahim will be chasing him in his white Toyota Cressida. Both of the drivers are lined up, waiting for the cue. The driver is ready. Mohammad Ibrahim on our screen. He'll be chasing in his white Toyota Cressida. Heads up मिल चुका है यहाँ पे दोनों जो drivers निकल चुके हैं from the start area. And there you go. Both of the drivers are on the track. Zone 2 को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से chase मिलता हुआ अब्दुल्ला मरवत को इब्राहिम की तरफ से थोड़ा सा प्रेशराइज हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं. अब्दुल्ला मरवत बेहतरीन लीड ड्राइव यहाँ पर उनकी तरफ देखने मिलेगी. Approaching zone 4, बैक दोनों व्हील्स रहेंगे zone 4 के अंदर. क्विक ट्रांजिशन टुवर्ड्स zone 5. बेहतरीन एंट्री एंड क्लीन फिनिश के साथ यहाँ पर अब्दुल्ला मरवत बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने रन को फिनिश करते हुए. इब्राहिम वाज टोटली क्लूलेस. ही wasn't able to synchronize, बिल्कुल proximity maintain नहीं कर पाए. And judges will keep an eye on this. A good first run from the side of Abdullah Marwat in the lead role.
Cars are back on the start line. Abdullah Marwat will be in the chase this time around on the left, and Ibrahim will be leading this run. First tandem of top 8. Abdullah Marwat going up against Mohammad Ibrahim. Mohammad Ibrahim was seen making many corrections outside zone 3, and that's where he totally lost it. He didn't keep up with Abdullah Marwat. काफ़ी एक distance बना लिया था Abdullah Marwat ने in his lead role. Now this time around he will be chasing Mohammad Ibrahim. Pressure रहेगा Mohammad Ibrahim के ऊपर. This is his second run. Obviously judges will be keeping an eye. And there you go. Start line. Quick cue दिया जाएगा यहाँ पर. Ibrahim in the lead with his Toyota Cressida and Abdullah Marwat in his Toyota Chaser. There you go. X90 move करते हुए Ibrahim going in. And there you go. Early यहाँ पर acceleration देखने को मिले. And switching into the drift. फर्स्ट जोन मिस आउट करते हुए नजर आएंगे. पूरी तरह से यहाँ पर अब्दुल्ला मरवत उनको चेस करते हुए नजर आएंगे. जोन 3 को यहाँ पर टच करते हुए. क्विक करेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ इब्राहिम. दिस टाइम अराउंड ही इज लीडिंग. अब्दुल्ला मरवत इज चेसिंग हिम बिहाइंड. जोन 4 के अंदर पूरी तरह से बैक व्हील थोड़े से उतरते हुए ट्रैक से नजर आए. क्विक ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन गोइंग इनटू जोन 4. फिनिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं यहाँ पर इब्राहिम. Ibrahim will finish his run with a strong drift, finishing it off on outside zone 5. Both of the drivers crossing the finish line, and that was our first tandem of top 8. Abdullah Marwat going up against Mohammad Ibrahim. In the second run, Mohammad Ibrahim was leading and Abdullah Marwat was chasing. बहुत ही बेहतरीन proximity maintain की गई यहाँ पर Abdullah Marwat की तरफ से, and Ibrahim was going all in with his lead run. Next up we have Muhammad Umar going up against Usama Rashid. Muhammad Umar जो है वो lead first करते हुए नजर आएंगे, and Usama Rashid will be the one chasing this time around. Let's have a quick look who won the first tandem of top 8. It was between Abdullah Marwat and Mohammad Ibrahim. And let's have a quick look. And this is none other than Abdullah Marwat getting the first win and proceeding to top 4. Top 8 से top 4 की तरफ जाते हुए हमें नजर आएंगे Abdullah Marwat in his Toyota Chaser X90. Next one, this is Osama Rashid going up against Muhammad Umar. Umar in his JZX 90 and unko chase करते हुए नजर आएंगे Osama Rashid in his BMW E46. Muhammad Umar, as we were having a conversation on the track, he said okay, he wants to finish strong. And Osama on the other side, this is the first time competing against these drivers, so obviously this will be in itself a unique experience for that driver. Osama Rashid obviously making it to top 8, and his first run was obviously in itself a big commitment from the side of this guy.
Mohammad Umar in the lead, and then we have Osama Rashid in the chase. There you go. Quick acceleration going toward initiation zone. Both of the drivers lead यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट लेते हुए जोन 1 को उनकी तरफ टच किया जाएगा. जोन 2 के अंदर जाते हुए लीड ड्राइवर बेहतरीन क्लोज कॉल यहाँ पर रहेगी. जोन 3 के अंदर इनिशिएट होते हुए चेस कार थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी मेंटेन करने में डिले आता हुआ नजर आता है. एंड देयर यू गो. उमर इज मेकिंग श्योर दैट ही मेक्स दैट डिस्टेंस. ज़बरदस्त फिनिश लेने की कोशिश उमर की तरफ से. टचिंग एवरी जोन 5 की एंट्री यहाँ पर लेंगे उमर. एंड बेहतरीन फिनिश और फिनिश लाइन को क्रॉस करते हुए उमर ऑन हिज फर्स्ट टेंडम रन. पहले रन के अंदर जो है वो यहाँ पर बेहतरीन लीड रोल के अंदर उमर हमें नज़र आए. एंड हसन ऑब्वियसली ही वाज लैगिंग अ बिट बिहाइंड. थोड़ा सा यहाँ पर आउटसाइड जोन 3 क्रॉस करने के बाद अपना मोमेंटम खोते हुए नज़र आए हमें हसन. बट लेट्स हैव अ क्विक लुक. ब्यूटीफुल एंट्री कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ मोहम्मद उमर. जोन 2 के अंदर भी थोड़ी सी यहाँ पर एक स्लाइड करेक्शन देखने को मिली. And then zone 3, this is where Osama couldn't even keep up with the guy, and I think that was the point where Omar already had an advantage over his competitor on his chase car. Going back to the start line, management team is waiting for the drivers to come in and waiting for them to line up this time around. Mohammad Umar will be the one chasing Osama Rashid. Osama Rashid in his BMW E46. And then we have Mohammad Umar in his JZX 90. Mohammad Umar this time around in the chase. Osama Rashid will be in the lead, leading this run. Q मिलता हुआ दोनों drivers यहाँ पर. Quick acceleration coming from the side of the lead driver. Osama Rashid going in the first corner. This is the difficult one. बेहतरीन किस्म का chase यहाँ पर मिलता हुआ Osama Rashid को मोहम्मद उमर की तरफ से. Close synchronization, proximity भी maintain करते हुए नजर आएंगे. Checking एरिया जो है वो यहाँ पर क्लिपिंग एरिया को क्रॉस करते हुए एंटरिंग इनटू जोन 4. ज़बरदस्त किस्म का ड्रिफ्ट देखने को मिला उसामा राशिद की तरफ से. एंड फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग उसामा राशिद एंड राइट बिहाइंड हिम फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए मोहम्मद उमर. दिस विल बी अ क्लोज कॉल ऑब्वियसली. फर्स्ट रन को कंसिडर करते हुए उसामा राशिद दिस टाइम अराउंड ही वाज डूइंग प्रीटी बेटर इन द लीड रोल. एंड आई वुड से लीड के अंदर काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए हमें नजर आए यहाँ पर उसामा राशिद. Look at this quick entry into outside zone 1 and then going toward outside zone 2. Look at the kind of chase Mohammad Umar gave Osama Rashid in the second run and keeping a close proximity. ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करते हुए नजर आए यहाँ पर मोहम्मद उमर. बहुत ही बेहतरीन रन उनकी तरफ से. And just waiting for the drivers. And before we go there, let's see who made it to the next phase of this Pakistan Drifting Series 2025. Both of the drivers coming for a quick close in. And we will have our winner on the screen shortly. This was Mohammad Umar. Both of the drivers will hold in and waiting for the verdict. And Mohammad Umar will be the winner of this tandem. Mohammad Umar right on your screen, guys, in his Toyota JZX 90. बेहतरीन रन मोहम्मद उमर की तरफ से. Look at that. This time around we are going into our third tandem. Hassan Butta going up against Ahmed Riaz. Hassan Butta will be the one leading the charge, and Ahmed Riaz will be aggressively chasing him. This could be one of the best runs. Hassan would have to make sure कि अपने वो lead run को बहुत अच्छे तरीके से execute करें.
Hassan Butta in his BMW E46. There you go. क्यों मिलता हुआ यहाँ पर दोनों ड्राइवर्स एक दूसरे के काफ़ी करीब. ज़बरदस्त किस्म का रन, क्लोज कॉल. दोनों ही ड्राइवर्स एक अच्छी इनिशिएशन के साथ बेहतरीन चेस मिलता हुआ यहाँ पर हसन बुट्टा को अहमद रियाज की तरफ से गेटिंग इनटू आउटसाइड जोन 3 मूविंग टुवर्ड द क्लिपिंग जोन. दोनों ही ड्राइवर्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी डोर टू डोर यहाँ पर आते हुए जोन 4 की तरफ मूव करते हुए जाएंगे. काफी ज्यादा लीड ले चुके हैं यहाँ पर. एंड दिस इज ऑफ ट्रैक फ्रॉम द साइड ऑफ हसन बुट्टा. दिस इज अ बिग डिजास्टर. This is the biggest disaster on the lead run from the side of Hassan Butta. Very unfortunate, but Usama Rashid gave a very aggressive chase on to Mohammad Ahmed Riaz, giving a big chase on to Hassan Butta. Lead driver off track होते हुए हमें नजर आए यहाँ पर. Look at that. This was a close call. Hassan Butta ब्रेक उन्होंने अप्लाई की यहाँ पर, बट दिस वाज अ क्लोज कॉल. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का चेस मिला यहाँ पर हसन बुट्टा को इन हिज फर्स्ट रन. एंड हसन बुट्टा लीड ड्राइवर यहाँ पर पहले ही रन के अंदर ऑफ ट्रैक होते हुए नजर आए. एंड अहमद रियाज आई थिंक डेफिनेटली इन द साइट्स ऑफ जजेस. अहमद रियाज यहाँ पर हमें जो है वो ऑब्वियसली अपना रन कंप्लीट करते हुए नजर आए. Again, the judges will make sure that they give their verdict. This was a very good initiation into outside zone 4, but a little unfortunate on the side of Hassan Butta के वो यहाँ पर उनका जो रन है वो कंप्लीट नहीं कर पाए. It was only one transition more and he would have been finished quite spectacularly, और अपने इस रन को फिनिश करते हुए नजर आते हैं. There you go. The chase driver Ahmed Riaz having a conversation with the Raja Faizan. Now this competition is turning into a different overall situation. And I think Ahmed Riaz will be proceeding forward into top 8. Next tandem इसके बाद होने वाला है फरहान आफरीदी versus Haris Khan, and Haris Khan will be leading up against Farhan Afridi. This was Ahmed Riaz. He made sure after he finished his run, he went check on his lead driver. We'll go on a quick run. यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टार्ट जोन का एरिया दिखाते हैं. But we're going on a short break. Guys, don't go anywhere. We will be right back with our next tandem.
And this was our third run of the day. Hassan Butta going up against Ahmed Riaz. Ahmed Riaz first run के अंदर जो है वो फिनिश अपना रन करते हुए while chasing Hassan Butta outside zone 4 clear करते हुए Hassan Butta जो है वो यहाँ पर off track होते हुए मैंने नजर आए. But rest. Let's have a quick break, guys. We will be right back.
Welcome back, guys, once again after a short break. So the driver have a 5-minute timeout जिसमें गाड़ी को एक दफ़ा फिर से देखा जा रहा है and will be checked out if it's ready for the run number 2 for this tandem. Top 8 के tandems जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर और Hassan Butta was that unfortunate driver जो थोड़ा सा टी ट्रैक होते हुए नजर आए कुछ देर पहले and now he is preparing once again for the second run. पूरी तरह से गाड़ी को जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है देखा जा रहा है कि if there is any damage जो कि उनकी अगली रन में प्रॉब्लम कॉज कर सकती है for Hassan Butta. 3 minutes 50 seconds to go and judges जो है वो go ahead देंगे यहाँ पर कार क्रू को कि if it's good to go for the second run. मैकेनिकल चीज़ें सारी जो है वो यहाँ पर चेक की जा रही हैं मेक श्योर किया जा रहा है कि Hassan Butta is ready for the next run. And this is our third tandem of top 8. Hassan Butta versus Ahmed Riaz. Ahmed Riaz बहुत अच्छा chase किया उन्होंने and it was slightly unfortunate for Hassan Butta, otherwise he was finishing pretty strong. Zone 4 outside zone 4 clear करते हुए off track होते हुए नजर आए Hassan Butta and Ahmed Riaz actually completed his first run. 2 minutes 50 seconds and once it's go ahead from the side of judges we'll go for tandem number 3 run 2 जिसमें Ahmed Riaz lead करते हुए नजर आएंगे and we'll have Hassan Butta as the chase driver. We'll be chasing Ahmed Riaz in close proximity. Crew is still waiting on a quick confirmation from the side of the judges. If once it's a go ahead, then it will be ready for the run number 2. 2 more minutes. Yadre, we are in the second phase of our final day. Top 8. दो tandems complete हो चुके हैं. Abdullah Marwat up going up against Muhammad Ibrahim, जिसमें Abdullah Marwat taking the win. Second tandem was Muhammad Umar, the lead first driver, going up against Osama Rashid, who was chasing him in first run, and Muhammad Umar was the winner of that tandem. Beautifully उन्होंने अपने chase और lead दोनों को complete किया था. Now we are on our tandem number 3, Hassan Butta versus Ahmed Riaz. Hassan was leading the previous run. Ahmed Riaz उनको chase कर रहे थे, and now we have 1 more minute to go before it will be a final call from the side of judges whether Hassan Butta will be going for another run or no. Ahmed Riaz is also waiting for the verdict कि क्या वो by run यहाँ पर by run जो है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे या Hassan Butta will be chasing Ahmed Riaz in this third tandem. One more seconds. Once is a go ahead. Second run के लिए, third run के लिए, second run of tandem number 3. हम ready हो जाएंगे at the start line.
all the fans are anxiously waiting कि next हमारा run जो है वो कब start होगा. It's 5:34 here in Lahore, and you're watching Pakistan Drift Showdown. Pakistan Drifting Show 2025. Final 2 runs of one tandem and one run for this year's top 8. Sunbuta keeping an eye while team is working on the vehicle, making sure it's safe for the next one. I think front bumper जो है वो drop किया जाएगा, remove कर दिया जाएगा. It's already half broken. Again, it's not just the car fans. Everyone is waiting for the tandems to start again. There you go. Front bumper drop कर दिया जा चुका है. And vehicle के तमाम angle kit और इस बाकी चीज़ें भी यहाँ पर check की जा रही हैं, making sure that it's ready for the next run. As I was saying, everyone is anxiously waiting कि कब हमारा जो है वो दोबारा से रन जो है वो शुरू होते हुए नजर आएंगे. Oh, there you go. I think this is the time. Bhutta is ready for the run, guys. The good news for all the Hassan Bhutta fan is that Bhutta is ready for the second run for this Tandem 3. And everyone thank you for joining us in the chat. Thank you everyone wherever you're watching this. We thank you so much. There you go. Hassan Bhutta getting ready, moving toward the start line.
This is our tandem 3 of top 8. Hassan Buta going up against Ahmed Riaz. Hassan Buta, after a thorough check from the side of crew, is moving toward the start zone. One final check before giving a go ahead for this brief run. Hassan Bhutto was leading the previous run, and now this time around he'll be chasing Ahmed Riaz. So once again, just waiting for a quick go ahead from the side of the drivers. Crew is still checking, making sure everything is in place, and they're ready to go for this second run. Tandem 3 of top 8. Either of these guys will qualify for top 4. In the meanwhile, already qualified for top 4, Abdullah Marwat. Just checking out what's going on, making sure that he's ready for the top 4. It was a quick run of Abdullah Marwat, which he handsomely, unanimously won against Muhammad Ibrahim. Both of the drivers, Ahmed Riaz and Hassan Bhutta, just waiting for the cue in. There you go. Hassan Bhutta making sure that his tires are warmed up before he goes for the second run. And this was the same vehicle that got retracked, but this time around Hassan Bhutta making sure that the vehicle is in order before he goes on this second run. I think he will be allowed to compete up against Ahmed Riaz.
There you go. Ahmed Riaz going for a quick warm up. Making sure that he also warms up his tires. Both the drivers. A quick show for all the audience out there. Hassan Butta and Ahmed Riaz warming up. Getting ready for the second run. This time around, Ahmed Riaz will be leading and Hassan Butta will be chasing him. There you go, Ahmed Riaz and Hassan Butta lining up at the start position. Hassan Riaz this time around will be leading the charge, and Hassan Butta will be chasing him. There you go, Butta on the chase. Ahmed Riaz this time around going in the lead in his BMW E36, and going up against Hassan Butta, BMW E46. Let's give it for Hassan Butta once again on the start line, waiting for the cue. This time around, Hassan will be chasing Ahmed Riaz. Pressure थोड़ा सा ज़रूर रहेगा Ahmed Riaz के ऊपर. And big respect for Mr. Hassan Butta, driver Hassan Butta. And there you go. We are going into our second run. This time around, Hassan Butta chasing. After that situation that he was in, there you go. Quick close in. Quick chase. Spin out from the side of Hassan Riaz. He is the one that was chasing and leading. And now, this time around, this is Hassan Butta who is chasing Hassan Riaz. Hassan Riaz. Quick spin off Ahmed Riaz. Quick spin off. Close to outside zone 2. And I think judges will pass their remarks based on this run. Well, so far this run has no definite result, and this will be one more time between Hassan Butta and Ahmed Riaz. Let's have a quick look. This was it. First zone बेहतरीन तरीके से clear करते हुए नजर आए, and this was that spin off which actually derailed the overall control of Ahmed Riaz. Going back to the starting line. Next run between Haris Khan and Farhan Afridi. Both of them going up against each other. Farhan Afridi in his Toyota Cressida going up against Farhan Afridi's Toyota JZX 90. Farhan Afridi बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक अपने लिए स्पॉट बनाया है इस टॉप 8 के अंदर. In his first tandem of top 16, he was up against Hamad Afridi. There you go. On the lead, it's Haris Khan, and Farhan Afridi will be chasing him in the first run. It will be a big run for Farhan Afridi as he will be chasing Haris Khan. Haris Khan was very dominating in his top 16 run while he was leading up against. There you go. A big thumbs up coming from the side of Farhan Afridi. Just waiting for the cue from the side of the crew members.
Haris Khan leading the charge. Here we go. Quick acceleration, getting into initiation zone. लीड लेते हुए यहाँ पर हारिस खान फर्स्ट शिफ्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रैकिंग आती हुई यहाँ पर फरहान अफरीदी की तरफ से बेहतरीन चेस एंटरिंग इनटू जोन 3 क्लोज कॉल यहाँ पर रहेगी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बना चुके हैं यहाँ पर पहले से ही हारिस खान एंड दिस विल बी अ क्वाइट डोमिनेटिंग रन ब्यूटीफुल शो on the coming from the side of Haris Khan, finishing off strong and a good chase given by the side of Farhan Afridi as well. But judges will keep an eye on the overall performance. I think Haris Khan was in a quite dominating position, hitting every corner, every outside zone, and making sure that there is minimal correction on his side. Let's have a quick look. This was the initiation, getting into outside zone 2. Quick transition towards outside zone 3 and beautiful layout. Both of the rear wheels aligning with the line, as this was the point where Farhan Afridi lost the overall commitment, I must say, in the chase. Let's go. Let's go for the second run this time around. Haris Khan will be chasing Farhan Afridi. A lot of pressure on Farhan Afridi. Haris Khan, I think he'll be more happy to see the overall performance he had in the first run up against Farhan Afridi. Qualifying for top 4. Farhan Afridi in the lead, and this time around Haris Khan will be in the chase. Haris Khan chasing in his Toyota Cressida, while Farhan Afridi will be leading in Toyota JZX90. Waiting for the cue. There you go. Quick initiation. Getting right in. Haris Khan leading the charge. What a way to start his second run. Beautiful execution. Going for every corner. Making sure he has a beautiful angle on it. Clipping zone, moving toward zone outside zone 4. Very close call. Good chase coming from the side of Haris Khan. Once again, a very close call coming from the side of both of the drivers. And what a beautiful finish, but a quick spin off on the final moment before the finish line. Farhan Afridi missing out the run. It was a very strong lead, but unfortunately, at the very final moment, it was a spin-off. Unfortunate for Farhan Afridi, but judges will keep an eye on this overall performance. We'll see who will make it to the top 4. But this was a beautiful chase coming from the side of Haris Khan and his Toyota Cressida. Look at that. What a beautiful entry coming from the side of Farhan Afridi. And he kept his momentum going up until outside zone 5. Oh, beautiful alignment. Both of the cars going side by side. And both of the drivers are ready for the verdict. And I think our winner is... Let's have a quick look. Haris Khan. Haris Khan will be the winner, moving toward top 4. And Farhan Afridi, what a lead run it was, but very unfortunate. Going for a spin-off at the very end. Let's go for... It's very important that जब आप drive कर रहे हो, especially while you're leading or even you're chasing, the driver safety is very important. Make sure you wear all of your safety gear and making sure that the driver have a safe drifting experience. Let's go for one more time. Hassan Butta going up against Ahmed Riaz. It was a very strong start from the side of Hassan Butta. Well, let's see. Quick cue का wait किया जा रहा है यहाँ पर. Hassan Butta in the lead. Once again, fast initiation. बहुत अच्छा launch किया यहाँ पर उन्होंने. And going for the first outside zone. Zabardast entry from the side of Hassan Butta. Close call, close chase. बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अहमद रियाज चेस करते हुए, बहुत ही क्लोज चेस करते हुए हसन बुट्टा को क्लिपिंग जोन फिनिश, गोइंग फॉर
the zone 4 once again, and this was the moment where last time it was a situation which Hassan Butta dealt with, and now what a good finish, a beautiful work coming from the side of Ahmed Riaz, a beautiful chase. This will be a close battle. Let's wait for the final verdict after the second run. Amazing work done by the side of Ahmed Riaz. What a beautiful chase, keeping the proximity, making sure that he's up close to the door, and finishing it off strong in zone 5. Beautiful entry from the side of Hassan Butta at the very start. And a look at that synchronization coming from the side of Ahmed Riaz, following every bit of this run and making sure Hassan Butta cannot get away with anything. But what an amazing driver Hassan Butta is. Respect for this guy. Well, he had that unfortunate event in the previous run, but this time around he came out strong. But look at that synchronization and chase coming from the side of Ahmed Riaz. Hassan Butta and Ahmed Riaz. Amazing show coming from these guys. First run, Ahmed Riaz chasing. Hassan Butta was leading in his BMW. Both of the guys driving BMWs. One is E36, another one is E46. Beautiful work done by the side of both of the guys. Good chase coming in, and a strong finish coming from the side of Ahmed Riaz. Slight correction we saw just before the outside zone 5. We are ready for the next run this time around. Ahmed Riaz is leading. Hassan Butta will be chasing him. Ahmed Riaz, quick initiation, keeping the distance. There you go. The drift starts. Very good work done from the side of Ahmed Riaz, leading the charge. Close call coming from the side of Hassan Butta. Hassan Butta keeping it very close to the rear bumper. Oh, but it's a spin off from the side of Hassan Butta, and Haris and Ahmed Riaz will keep going with his run, and this is what Ahmed Riaz was hoping for. Very unfortunate, but Hassan Butta with the spin off couldn't complete the chase, and now I think we have a definitive result coming from the side of judges, who will actually proceed toward the next phase of this top 4. Beautiful work done by the side of Ahmed Riaz. What a beautiful lead. ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर उनकी तरफ से कंट्रोल देखने को मिला, and especially outside zone 2 is very difficult to maneuver, and still he managed to do that. Beautiful work done. A spin off, and lovely work done from the side of Ahmed Riaz, finishing it off strong. Both of the rear wheels inside the zone and crossing the finish line. Beautiful run coming from the side of Ahmed Riaz. Let's have a quick look. Both of the drivers waiting for the verdict. And let's see who will proceed toward top 4. You're watching Pakistan Drift Series 2025. Verdict will be given out, and it is Ahmed Riaz winning this tandem and moving forward to top 4. Top 4. Beautiful work done by these guys. Ahmed Riaz finally making it to the top 4. Hassan Butta is out of the competition. Very unfortunate. He was one of the favorite drivers for this year's 2025 PDS. But what an amazing run we saw from the side of Ahmed Riaz. Truly an underdog. Beautiful work done by the guy. As he was saying in the interview, unka first time hai aur he's making it to top 8. It's a big deal for him, and now he's making it to top 4. Obviously, all of his supporters, all of his family members will be proud of him. And the way this guy drove today, I must say, what an amazing run. Well, let's see who's getting ready for the next phase of our competition. We are very close to getting to the final 3 drivers. We have top 4. One of the driver will get eliminated, and the driver who will lose the first run will compete. The drivers who will lose will compete for the 3rd place as well. Both of the losers will compete
for we are pretty close to the top 4. I do have the standings and especially the next tandem battles. टॉप 4 की जो 4 ड्राइवर्स हमारे पास अभी तक के लिए देखने को मिल रहे हैं. अब्दुल्ला उमर, but we have Mohammad Umar, Ahmed and Haris finally qualifying from Farhan versus Haris. Ahmed, the one who just eliminated Hassan Butta, is now going up against another prodigy of a driver, Haris, the guy with all the style points. I must say, he's the one I've seen so far enjoying the process, making sure that he's taking it easy. And we'll see how this next fixture, how this next battle will shape this competition. Marwat or Muhammad Umar, either of these guys, whoever will do best, will proceed to the next phase of, and the final, I must say, of tandem battles of this year's PDS 2025. Our next 2 drivers are already lined up. Whether the drivers are ready at the lineup grid, and it will be a quick warm-up, and then we'll get ready for our top 4 tandems. This time around, it's Abdullah Marwat going up against Muhammad Umar. Muhammad Umar काफ़ी एक interesting interview इनके साथ रहा. He said he wanted to be a football player, but now he is making the cars dance, making sure that the vehicle behave itself while Muhammad Umar is driving it. While our drivers are getting ready, let's go for a quick replay. First run, Hassan Butta leading. बहुत ही ज़बरदस्त proximity maintain की यहाँ पर Ahmed Riaz, and look at that, just mimicking every move of Hassan Butta. Clipping zone complete करते हैं, and now look at that amazing drift coming from the side of Hassan Butta while he was in the lead, and Ahmed Riaz बेहतरीन उनकी तरफ से चेस किया गया यहाँ पर हसन बुट्टा को. Let's getting ready for our next
Tandem semi-finals. This time around, Abdullah Marwat is going up against Muhammad Omar. You can see in the back, the drivers are warming up their tires. Abdullah Marwat going up against Muhammad Omar. Both of the drivers making sure they're ready before they go for the run. Abdullah Marwat, one of the favorites when it comes to these final battles. This time around, Abdullah Marwat will be leading and Muhammad Omar will be chasing. So the first semi-final, Abdullah Marwat going up against Muhammad Omar. Toyota Chaser X90 going up against Toyota JZX90. Both of the drivers are lined up. Both of the riders, both of the drivers are ready. Just waiting for the cue. Just waiting for the cue. Beautiful side angle. Just waiting for a thumbs up from our driver, Abdullah Marwat. There you go. He's ready for the run. Let's go. Just waiting for the cue. 1, 2, 3. Let's go. First semi-final. Abdullah Marwat going up against Muhammad Omar. Quick lead. बेहतरीन किस्म की एंट्री यहाँ पर मिलती हुई एंड इसी के साथ कंट्रोल कितना ज़बरदस्त but a slight correction coming from the side of Abdullah Marwat but good chase from the side of Muhammad Omar. Zone 3 outside zone 3 को कवर करते हुए इसी के साथ काफ़ी तेज़ इनिशिएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है. चेस में काफ़ी पीछे रह चुके हैं मोहम्मद उमर but Abdullah Marwat making sure that this chase is not easy for Muhammad Omar. Beautiful work done from the side of Abdullah Marwat. Let's have a quick look at the replay of this previous run. What a beautiful start coming from the side of Abdullah Marwat. And look at that control, slight correction. Both of the tires, he made sure that land into the zone. And another outside zone clearance coming from the side of Abdullah Marwat. And Muhammad Omar was just couldn't keep up with the whole run. Beautiful work done from the side of Abdullah Marwat. And making sure that chaser is being chased by Muhammad Omar. But still not a match. Both of the drivers again lining up at the start position. This time around Muhammad Omar will be the lead and Abdullah Marwat will be chasing him in his Chaser X90. Waiting for Muhammad Omar to line up. This time around he'll be leading the charge. Obviously it's going to be a bit difficult for Muhammad Omar. He's already under pressure. His first chase was not on point as much as he was trying to get. There you go. Double thumbs up. Beautiful work from the side of Muhammad Omar. He's enjoying himself in there. Just making sure that he enjoys the whole process. Waiting for the cue. Both of the drivers lined up. It's quite a pressure situation for Muhammad Omar. Marwat had a very good lead chase. This time it's Omar's turn. Omar drifts. What a good initiation. Quick acceleration. Going for the first outside zone. There you go. Beautiful entry. And Omar drifts. Definitely takes it with Abdullah Marwat chasing close to close, door to door. Both of these guys applying pressure onto each other.
There you go, मोहम्मद उमर बेहतरीन यहाँ पर अभी तक की तरफ से देखने को मिल रहा है. Clipping zone कवर करते हुए going for zone 4. Beautiful work done, and what an amazing door-to-door proximity maintenance from the side of Abdullah Marwan. Going for the final zone, he has to clear this. Mohammad Umar this time around making sure that he has a beautiful finish, crossing the finish line. Mohammad Umar, what a run it was this time around in the lead role. Abdullah Marwan keeping it just side to side with Mohammad Umar, applying that pressure which was much needed. But Mohammad Umar did pretty well under this pressure. Let's go for a quick look to the replay. Beautiful entry on the zone 1. Full clearing it out on zone 2. Both of the rear wheels getting aligned, and then going for outside zone 3, making sure every corner is touched. This was a slight correction coming from the side of Abdullah Marwat. Look at that. So close to each other. Just aligning the doors. Beautiful switch. Look at this beauty coming from the side of Mohammad Umar and his Toyota JZX90. Slight correction coming from the side of Abdullah Marwat, but Mohammad Umar just making sure that he hits every corner while on that lead run. Look at that once again, guys. Just admire the beautiful synchronization coming from both of the guys. Let's see. Waiting for the judge's verdict, and the judges are just making sure they have their decision ready. Let's see. Marwat is waiting for the decision, and then on the other side we have our second driver, the one who was in lead in second run, Umar drifts. Oh my God, this guy is enjoying himself, man. Always smiling. Always smiling. Making sure it's still a difficult verdict for the judges. What a run it was in the beginning. The lead was amazing from Abdullah Marwat in his first run. Both of the guys might lose some points in the chase, but we'll see how judges will give their final verdict. It all comes down to only few points: line, angle, and style points. If you miss any of those, definitely it will be difficult for you to win the semi-final. The way Umar had this run, I'm pretty sure that he will be able to get a good result coming from the side of judges. Let's see. It's a difficult one. A lot of tension in the both of the drivers waiting for the verdict. Just making sure that they mark this run. Making sure that this let's have a quick look at the overall run. Oh my God. What an amazing lead coming from the side of Umar Drifts. Not giving anything to Abdullah Marwat, but Abdullah Marwat, while he was chasing, he just made sure that he's chasing the guy door to door. And look at that once again. Close proximity, an aggressive chase coming from the side of Abdullah Marwat on every outside zone. But I think before entering zone 5, this was the point where it gets a little difficult for the judges to decide who actually got more points once again.
It's a close call. Very difficult for just waiting for the decision from the side of judges. You saw how close this tandem was, this tandem battle was. Just making sure that they mark this tandem battle as fair as possible. Both of the drivers waiting for the verdict. Muhammad Umar. Obviously, it is one heck of a run from this guy, but judges are still deciding. It's a big discussion going on. All three judges is getting a difficult decision for them. TBA making sure that he is letting other two judges what he's thinking with his judgment. Both of the drivers anxiously waiting. Both of the drivers still waiting for the final verdict. Let's see, either it's Abdullah Marwad or Muhammad Umar proceeding toward the next phase. First semi-final of PDS 2025. It's becoming a difficult decision for the judges. It's a long discussion going on between all three judges. Both the drivers are waiting. Whether it's Umar Drifts or Marwat FPV taking it home, and I would say taking it to the next round, to the finals. Judges still waiting, having a discussion, making sure that they mark this fight as fair as possible. Still waiting.
Still waiting for the verdict. Making sure. Just making sure what will be the final verdict. Beautiful work done by Umar Drifts on his lead run. Was quite confident when it comes to clearing the outer zone 4 and outer zone 5. What a beautiful finish coming from this player, this driver. Abdullah Marwat and Omar Drifts both waiting for the verdict. Still, it's a long discussion between the judges, making sure that this fight is given a final verdict. Let's see who of these fighters will move toward the next phase, the finals of this BDS 2025. I think the verdict is with us. It's one more time, once again. Marwat going up against Muhammad Umar once again, but this time around, this is one more time. Let's go for the second semi-final. Haris Khan going against Ahmed Riaz. Ahmed Riaz going against Haris Khan. Haris Khan, I must say, one of the drivers with the elite level control on his vehicle. But Ahmed Riaz, he finished very strong in his tandem battle against Hassan Butta. Let's wait for our next run. Waiting for. It was a quick verdict from the side of judges. थोड़ा सा problem था मोहम्मद उमर के इनिशिएशन में, एंड देन द फाइनल जो जोन 5 आउटर जोन 5 को क्लियर करते हुए अब्दुल्ला मवद जो है वो अपने कुछ पॉइंट्स लूज करते हुए it
will be a redone once again, but we'll move toward semi-final 2. Ahmad Riaz going up against Haris Khan. Still having a quick discussion with another driver as well. Just making sure the verdict is given fair. But I think some of the judges said it's still unclear the way Mohammad Umar initiated his run on the lead. This was something which was problematic, and that's the reason why one more time is requested by judges. Once again going into the replay, just having a quick look कि कहाँ पर जो है वो जजेस को यहाँ पर अपने वर्डिक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. This was a close pass by Umar on outside zone 3, then going into outside zone 4. Beautiful entry from the side of Umar Drifts. Abdullah Mawad just doing a quick chase. And a strong finish coming from the side of Muhammad Umar. Initiation was something उसके बारे में judges discuss करते हुए नजर आए from the side of Muhammad Umar, but we'll see. It's again one more time. So nothing to worry about. Beautiful synchronization at outside zone 4 from both of the drivers. PDS 2025 semifinals. Semifinal 1. Abdullah Umar going up against Muhammad Umar.
Looking at the semi-final 2, we have Ahmed Riaz going up against Haris Khan. Both of the drivers getting ready, moving toward the start line. It'll be a quick warm-up and then both of the drivers will line up. Quick warm-up coming from the side of Haris Khan and Ahmed Riaz. Semi-final number 2. PDS 2025 brought to you by SA Group and Vroom Racing Circuit. Ahmed Riaz going up against Haris Khan. Both of the drivers are now lining up. Haris Khan in the lead and उनको chase करते हुए नजर आएंगे Ahmed Riaz. Haris Khan in his Toyota Cressida and Ahmed Riaz driving a BMW. Both of the drivers are lined up, waiting for the cue. Ready. Just waiting for the cue. Semi-final number 2, Tandem battles. First run, Haris Khan leading in his Toyota Cressida. And Haris Khan will be driving his BMW. 1, 2, 3, go. Let's go. Fast initiation coming from the side of Haris Khan. Going in. There you go. First initiation. Getting into zone 1. Closing zone 2. Back bumper. Lose karte hue yahan par Haris Khan. Close call coming from the side of Ahmed Riaz. What an amazing run coming from the side of Ahmed Riaz and Haris Khan. Haris Khan, a beautiful execution. Close chase coming from the side of Ahmed Riaz. And Ahmed Riaz making sure that he's chasing Haris Khan in the hole and passing the finish line. Haris Khan leading, and it was such a close call. It will be a difficult one for judges to give their verdict. But let's go for a quick replay. Semi-final number 2, PDS. Haris Khan, बहुत ही बेहतरीन entry लेते हुए and moving toward outside zone 2. बेहतरीन follow-up, slight correction देखने को मिली chase के अंदर. Bumper अपना lose करते हुए नजर आए and then a quick switch toward outside zone 3. What a close call from both of the guys. What a chase coming from the side of Ahmed Riaz. Outside zone 4, Haris Khan, both of the rear wheels inside outside zone 4, and a strong finish coming from the side of Ahmed Riaz, while his rear wheels were inside the outside zone 5, and Haris Khan missing out zone 5 altogether. Beautiful chase from the side of Ahmed Riaz. Drivers are getting ready once again. We have Ahmed Riaz in the lead now. Haris Khan will be chasing. Both of the riders are ready at the start line, waiting for the cue. A big thumbs up from the side of Ahmed Riaz. Here we go. Ready. Let's go. This is the deciding run for the final. Fast initiation coming from the side of Ahmed Riaz. First zone ko touch karte hue and good spin off from the side of Haris Khan, and definitely Ahmed Riaz will complete his run, and Haris Khan is off track. And look at that, Ahmed Riaz going for his run finish. Beautiful work done.
Still, it will be judged by the judges. And a beautiful execution coming from the side of Ahmed Riaz. My goodness, what was that? Haris Khan, one of the favorite drivers, and totally missing out. Totally missing out on the first outside zone and getting detracked. बिल्कुल ऑफ ट्रैक होते हुए नजर आए यहाँ पर हमें हारिस खान. Will still go for a complete run. But Ahmed Riaz, what an amazing lead coming from the side of this guy. It was a good chase, but very unfortunate for the side of Haris Khan, one of the favorite drivers. Will be competing for the third phase. What an amazing run coming from the side of Ahmed Riaz. Good chase and then another amazing lead coming from the side of Ahmed Riaz. Once again, the drivers are getting lined up. Judges are still waiting on their verdict. I think it'll be a one more time. Drivers are getting ready for the next run.
waiting for the drivers to line up once again. But before we go there for our next run, let's go for a short break. We'll be right back.
Welcome back after the short break, and you're watching PDS 2025. This is your host Hassan. This is Abdullah Marwat going up against Muhammad Umar once again. And good start. Abdullah Marwat on the lead. There you go. Quick follow up from the side of Muhammad Umar, keeping a close proximity. Abdullah Marwat doing an amazing job so far, and line is being chased properly by Muhammad Umar as well. Abdullah Marwat entering outside zone 4, clear करेंगे outside zone 4 को, and zone 5 के अंदर line को follow करने की कोशिश. And what an amazing finish from the side of Abdullah Marwat, and a beautiful chase coming from the side of Muhammad Umar. First semi-final of PGS 2025. लीड पर थे अब्दुल्ला मरवत और उनको चेस कर रहे थे मोहम्मद उमर in his JZX 90. Toyota Chaser versus JZX 90. Beautiful run. Slight correction यहाँ पर देखने को मिली. Then again another corner touch from the side of Abdullah Marwat, and line को follow करते हुए नजर आए Muhammad Umar, making sure that he keeps it nice and close right behind the rear bumper, making sure close in करते हुए यहाँ पर. Again another slow motion, both the cars lined up, and Muhammad Umar following the lead of Abdullah Marwat. Beautiful run, first run coming to an end. Second run के लिए जाएंगे. Both of the drivers are ready, and this time around Muhammad Umar will be leading this tandem battle, and he'll be chased by Abdullah Marwat. Both of the drivers coming to the start line, waiting for a quick cue in before they go for the run. This time around, Abdullah Marwat is on the chase. Lead is Muhammad Umar, and there you go. Cue मिल चुका है. 1, 2, 3, go. दोनों ही drivers जबरदस्त start initiation मिलता हुआ Muhammad Umar को. Muhammad Umar drifts, clearing the beautiful line coming from the side of Muhammad Umar, and a quick follow-up, close follow-up by Abdullah Marwat. Outside zone 3 clear करते हुए, बेहतरीन line follow करते हुए Abdullah Marwat this time around. Approaching zone 4, बेहतरीन अभी तक के लिए chase आता हुआ Abdullah Marwat की तरफ से, but Muhammad Umar is not leaving his line. Going for zone 5. Strong finish coming from the side of Muhammad Umar, and a beautiful chase coming from the side of Abdullah Marwat. This is getting even closer than before. Semi-final number 1, PGS 2025. Abdullah Marwat going up against Muhammad Umar. Beautiful lead coming from the side of Muhammad Umar. Obviously, you know, यहाँ पर judges जो हैं वो अपना verdict देंगे, but what a beautiful start coming from the side of Muhammad Umar. He kept his line, slightly missing out outer zone 2, but good recovery coming in the outer zone 3, and thereafter दोनों के दोनों zones को बेहतरीन तरीके से lead करते हुए हमें नजर आए Muhammad Umar, and Marwat was so close. Look at that shot. So close to Muhammad Umar, chasing every line of Muhammad Umar, making sure that you don't let him go easily this time around. Beautiful work done by side of Abdullah Marwat. But Muhammad Umar, let's see. Verdict जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा. दोनों ड्राइवर्स जो हैं वो अब आ रहे हैं verdict सुनने के लिए. Waiting for the judges' final decision of this semi-final. Let's see which of the drivers proceeds to the next phase. That's finals. And there you go. I think our judges have the winner. It's none other than I think it is none other than Abdullah Marwat going into this semi-final. Back to the action, guys. It's Haris Khan going up against Ahmed Riaz. Both of the guys, Haris Khan on the lead. Ahmed Riaz chasing. Close call.
बेहतरीन किस्म की drifting, and it's a spin off from the side of Ahmed Riaz, and Haris Khan will complete his lead run, crossing the finish line. Beautiful work done by the side of Haris Khan. Let's have a quick look at the replay of this previous run. Strong finish coming from the side of Haris Khan. बहुत अच्छा lead उनकी तरफ से किया गया. Ahmed Riaz following him till outside zone 4. और यहाँ पे वो एक जो है वो traction miss करते हुए Ahmed Riaz, and that was the moment where Ahmed Riaz actually let go both of his rear wheels, and Haris Khan proceeds with finishing the maneuver and finishing strong. Round 2 this time around. Ahmed Riaz in the lead, and Haris Khan is chasing him this time around. BMW going up against Toyota Cressida. Both of the drivers, one more time, there you go, Q मिल चुका है यहाँ पर. Ahmed Riaz strong start लेते हुए, flicking into the corner, first one, clearing outside zone 1, going for zone 2. Chase बहुत ही बेहतरीन किस्म का Ahmed Riaz की तरफ से. एक क्लोज चेस, हारिस खान भी यहाँ पर उनकी तरफ देते हुए लीड जबरदस्त तरीके से करते हुए जाएंगे. Ahmed Riaz going for outside zone 4. एक एंगल के ऊपर एंट्री ली जाएगी यहाँ पर. अभी तक के लिए बेहतरीन कंट्रोल मेंटेन करते हुए Ahmed Riaz. चेस आता हुआ, एंड चेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर जजेस, एंड Ahmed Riaz goes through the finish line, and both of the drivers passes the finish line. Beautiful chase coming from the side of Haris Khan, and decision is with the judges now. Let's see which of these drivers will proceed to the next phase, which is finals. Let's have a quick look. Good initiation. Line को follow उस तरह से नहीं कर पाए Haris Khan on the first outside zone, but second और third zone के बाद Haris Khan और Ahmed Riaz के दरमियान एक बड़ा डिस्टेंस बनता हुआ, proximity जो है वो कम से कम मेंटेन करनी होती है, वो नहीं उस तरह से कर पाए. But again, judges will decide which of these drivers will proceed forward. Both of the drivers waiting at the finish line, waiting for the verdict. And there you go. And final का verdict यहाँ पर मिलता हुआ. And Haris Khan will be crowned winner for this second phase. Going for the finals, Abdullah Marwat going up against Haris Khan, and now we're going for the final tandem battle before the final battle between Haris Khan and Abdullah Marwat. But before we go to the finals, we have our third position open for grabbing, जहाँ पर Ahmed Riaz और मोहम्मद उमर दोनों ही मायनाज ड्राइवर्स अपने लिए थर्ड पोजीशन पोडियम के ऊपर अपने आप को कंफर्म करने की कोशिश, थर्ड पोजीशन कंफर्म करने की कोशिश करेंगे. बोथ ऑफ द न्यू ड्राइवर्स, Umar and Ahmed Riaz, getting ready. I'll be a quick warm up before they go for the run. Crew is waiting for both of the drivers at the start line, but before they go there, there'll be a quick warm up by both of the drivers.
waiting for the drivers to get to the start line. Muhammad Umar and Ahmed Riaz will be competing for third position. Both of the drivers waiting at the decision. We're getting very close to crowning the champion of PGS 2025. Let's have a quick look at the replay of this previous run, where Ahmed Riaz was leading and Haris Khan was chasing him. Haris Khan keeping a close chase, making sure and Ahmed Riaz finishing it strong, but in overall points I think it will be a final decision coming from the side of judges, where Haris Khan will proceed for the finals and Ahmed Riaz is going to compete against Muhammad Umar for the third position. Is a timeout, guys? I'll be right back with you shortly. Once again back with action. Action resumes with our final two drivers after 2 days of action. Abdullah Marwat and Muhammad Haris is warming up their tires before going for their first run. This time around Abdullah Marwat will be in chase. And will be on the lead. Quick correction. Haris Khan going against Abdullah Marwat. Both of the drivers getting ready. This is the finals of this PGS 2025. Abdullah Marwat going up against Haris Khan. Lead के अंदर रहेंगे Abdullah Marwat और उनको चेस करते हुए नजर आएंगे Haris Khan in his Toyota Cressida and Abdullah Marwat driving a Toyota Chaser X90. Both the drivers line up. क्यों मिल चुका है यहाँ पर? Abdullah Marwat going for the run. Haris Khan on the back lines. What a beautiful initiation coming from the side of Abdullah Marwat, making sure he touches every zone. Very close chase coming from the side of Haris Khan. Outside zone 3 को दोनों ही drivers यहाँ पर clearly cover करते हुए going for outside zone 4. A big difference coming from the side of Abdullah Marwat. Haris Khan थोड़ा सा यहाँ पर पीछे रहेंगे, लेकिन this time around Haris Khan catching up and both of the drivers cross the finish line. Abdullah Marwat with a beautiful run
on the lead. Haris Khan अच्छा चेस देते हुए slightly पीछे रह जाते हैं after clearing out outside zone 3. Zone 4, zone 5 में अब्दुल्ला मरवत काफ़ी बड़ा distance बनाते हुए There you go, outside zone 4. This was the difficult part of the circuit, and just finishing off strong Abdullah Marwat. Again, drivers are ready. This time around, Haris Khan will be leading, and chase ke upar honge Abdullah Marwat. Toyota Cressida, Haris Khan going up against Abdullah Marwat. Toyota Chaser X90. Chase रहेगा, close call रहेगी Haris Khan. He's always strong on the leads. But we'll see. There you go. क्यों मिल चुका है? Going for the run. Fast initiation coming from the side of Haris Khan. अच्छी initiation. Angular entry यहाँ पर लेते हुए थोड़ा सा off track हुए. Smoke के अंदर यहाँ पर अब्दुल्ला मरवत को छोड़कर जाते हुए अब्दुल्ला मरवत still keeping his composure. Chase जारी रहेगा. Going for outside zone 4. दोनों ही ड्राइवर्स जबरदस्त close proximity maintained by Abdullah Marwat. Definitely he will get some points. And going for the final zone, and this will be a close call. Good finish coming from the side of both of the drivers. And Haris Khan, as said, always strong on the lead, but chase बहुत ही बेहतरीन किया गया यहाँ पर अब्दुल्ला मरवत की तरफ से. Things are getting very close, and I think we already know who will be winning this. But let's go for the final line before we check on the replay. Beautiful lead run coming from the side of Haris Khan for one last time. And our decision is still with the judges. Tense situation still. Both of the drivers are waiting for the verdict. Abdullah Marwat is confident. Still. हारिस खान यहाँ पर अब्दुल्ला मरवत से बात करते हुए. It was quite an emotional run for Abdullah Marwat.
both of the drivers. A very emotional moment for Abdullah Marwat. Decision is still pending, but Haris Khan and Abdullah Marwat, both of the drivers, waiting for the verdict. Champion आज के दिन crown होगा. This PGS season 2025. Going for a quick replay, guys. What a chase coming from the side of Abdullah Marwat this time around. For a soft track, होते हुए नजर आए Haris Khan, but still he managed to get back on the track and finishing his run in the lead. Look at that. What a finish by Abdullah Marwat once again. It was such an emotional moment for Abdullah Marwat. Still waiting for the judges to confirm the champion. Yeah. Such an emotional time for Abdullah Marwat. And I think judges have already made the decision. Haris Khan. Both of these guys are very close friends. But again, at the end of the day, one wins, another one loses. This is how the competition is. Haris Khan कंधों पर उठा लिया गया है यहाँ पर अपनी टीम की तरफ से. Oh, beautiful scenes, beautiful scenes. Haris Khan and Abdullah Marwat. Look at that, all the fans, all the supporters are riling up for the possible winners of this PGS 2025, Abdullah Marwat.
There you go. Welcome back once again. Solo's third place. ड्राइवर हाशिर जो है वो यहाँ पर थर्ड प्लेस लेकर जाते हैं. कप प्रेजेंट किया जाएगा उनको PGS 2025 सोलो ड्रिफ्ट रन्स के अंदर. हाशिर थर्ड पोजीशन अपने लिए एक्वायर करते हुए. द जजेस doing the prize distribution. Haris with a big smile, even though he had some problem with the car at the end, but still manages to get into top 3. And again, just quickly just talking to people at Arena where he wanted to talk about हाशिर किस तरह से उनकी स्टोरी है, किस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली को मनाया कि वो ड्रिफ्टिंग के अंदर आना चाहते हैं. इट्स अ वेरी यूनिक स्पोर्ट. And this one, second position in solo runs goes to Mohammad Ibrahim. First time coming to this competition, PGS 2025. Mohammad Ibrahim getting the second position all the way from Peshawar, winning his second position for solo runs. Now let's go for the first position solo. First place for PGS 2025 solo runs. And this time around, first place goes to Hamza Iftikhar. He was a solo winner, also competed in tandem battles and winning the first position in solo runs. Hamza Iftikhar winning the first position in solo runs. Judges presenting the trophy. A big smile on the face of the winner. And now let's go to the tandem battles. Going for the tandem battles results. Judges are talking about किस तरह से जो qualifying round है वो आपको set करती है for the tandem battles, because it's very important. आपका early on अगर एक momentum बन जाए, this time around let's see who will get the and this time around first place it is Abdullah Marwat, champion of PGS season 2025. Abdullah Marwat crowned as champion and winning this trophy once again. Abdullah Marwat, champion of tandem battles. Going for the second position. 2 trophies left. We're gonna see who will get the second place, which is quite evident. Haris Khan will be the winner of the second place this time around. Haris Khan from Islamabad winning the second place
in this PGS 2025, accepting his trophy. And I think that'll be it for today. Let's go for a quick replay of all of the qualifying clips of third one. This trophy will be awarded as a performance reward to Abdullah Marwat. Also gets there you go. We are done with the day, guys. We'll go for a quick replay. And this was our champion of this PGS 2025, Abdullah Marwat. We'll have a quick look at some of the replays जो कि Abdullah Marwat यहाँ पे दिखाएंगे, and then we will be signing off for PGS 2025.